Yo, welcome back to the live stream, day 14 of 2 months syllabus completion challenge. And today, we are gonna continue with chemistry. Let me just remove this and put my laptop cam, bam, and yes, wait a minute, I have to adjust my cam. Let me go a bit back. It's just fine. I just hope that I don't sleep, because there are certain times that I might find myself sleeping, and that is really crazy. I don't like that. So wait a minute, guys. I'll just check my audio and my video, because it's really important for me to check these kinds of live streams settings. Audio and my video, because it's really important for me to check these kinds of live streams settings. Alright, sorry for the delay. I had to pray, and that's why, because there is an additional prayer that we do before live streaming. If you don't know, I had to do that actually, and it was I had a big delay based on that, so sorry for that. And let's start the today's live stream. I think this time I want to actually do a small stuff. This stream is gonna be a bit special. I don't know how to do this, but I feel like I'm gonna do non quiet mode. Basically, this stream is gonna be not quiet, meaning that you will hear a lot of sounds, and this could be disturbing. And yes, if you're actually really studying, then I might not recommend this. But if you're like kind of time passing, and if you want me to talk and all that stuff, then yes, this stream is for you. By the way, this stream is for you, because you're just not gonna study anything, or you're just gonna watch. It's gonna be for you. You'll get a lot of things to know, and we can have some fun. It's not based on only studies. So first of all, let me open my Chrome tab, because I gotta check the YouTube Studio. I need to get the idea, because the thing is that yesterday what had happened was the internet connection went off. So my stream I had to end my stream, because I wasn't getting any connection. I thought like I was gonna reach the 10-hour timeline, but that just messed it up, so I didn't really like that. But it's fine, guys. What else can we do? Anyways, oh yeah, wait a minute, let me go back. Let me just go back, and we gotta keep that back up, right? We gotta put that back. Anyways, so today we are gonna try our best to keep this as long as I can, and I will be putting this in non quiet mode, meaning that I will not be muting myself. You will be listening a lot of voices. It could be background noises, a lot of voices, and at certain times I might even have to mute. That's a really strong word for me. I really hate this thing to do. So first of all, why is it not working? What the, for some reason, why is it not working? What, I'm gonna put my password now. Wait a minute. Okay. Wait a minute. I don't get the idea. Okay. Yeah. Got it. Oh my god, bro. Did I put my password? No.
Come on. Yes, finally. No, I don't want to get into this account. And yeah, we are into our channel now. I have to go to my YouTube studio because I need to get the idea, or else I won't. If you don't know, of course there is a lot of chances you might be knowing is that the reason I'm capable of doing it like this is because I'm using OBS. You know what it is, right? OBS. I forgot the full form, but yes, OBS is a streaming software where you basically use this in order to, basically just have the idea. So let me just switch this on. It says that I have one viewer. I'm not sure how. Who is watching me now? Show me the analytics. I already got 3 views. How's that even possible? What? Huh? That is so doubtful. Never mind. Okay, so yeah, chat went off. It says 24-hour stream one day. Huh. Could be. 36 seconds. It's seconds. My bad. Seconds. 36 seconds. I accidentally misspelled it. My bad. Anyways, we are already 15 minutes into our live stream and we don't want to waste our time. So let's just dive into it. Man, I can't mute. This is gonna be a bit of problem. I hope this does not spoil anything up. And first of all, let me study equilibrium. That's a chapter on learning if you don't know. First of all, where did I stop off is basically I have to go through the whole thing. Okay, so equilibrium only takes place in reversible reactions, meaning that there is reactants and products, of course, in a reaction, but these reactants can also but there is not only one chance that you will see that reactants getting converted into products. You'll also see that products will get converted into reactants, meaning that this is a reversible reaction. It has two wait a minute, who's watching me? Okay, it has two types of reactions taking place: forward reaction and backward reaction. The forward reaction, of course, we know that reactants is getting converted into products, and backward reaction meaning that the products are getting converted back into the reactants. Now, if we talk about the equilibrium state, we see that the technical stuff that is going on here. Oh, someone just watched my stream. I don't know who it is, but there was some random guy. Gotta reload this. Oh dang, this is one concurrent viewer. We got the idea. Yes, we are really getting the idea. Okay, my bad. So why can't I reload this? Okay, what? Okay, never mind, my bad. Technically, we need to understand the main part here. The main part we should be understanding is that in equilibrium, the concentration remains the same. The pressure also remains the same. The temperature might vary. Does it happen? Kind of. Also, we have learned one thing is that in equilibrium, the net reaction is 0, meaning that the forward reaction is equal to the backward reaction, and that is true. Actually, it is a really great method to understand that. And net rate of reaction says that rate of forward reaction is subtracted to backward reaction. The rate of backward reaction. We gotta understand that. Yeah, we gotta know that. Let's go, my guy. And we also learned the thermodynamics concept known as the Gibbs free energy. The Gibbs free energy talks about one stuff, that is delta G. Delta G is equal to delta H plus D
delta S, meaning that's what we need to understand. That's a great concept. We gotta understand the main point right there. Okay, you got it? Yeah, you got it. I guess so. And equilibrium generally takes place in a closed container. The reason why is that, suppose you have a reactant that gets converted into products, multiple products, and one of the products is in gaseous state. Suppose, since it is in gaseous state, what we get to know is that it's basically getting released out, meaning that closed container, you are gonna trap the gaseous state, and since you're trapping the gaseous state, you're having the idea, yes, you're actually currently making this possible. Oh no, wait a minute, guys. What is going on? I'm not sure. There's one viewer who's going back and forth for some reason. I'm so confused. I'm so confused. I don't know who it is. He might be stalking me. I don't know. He might be the stalker, I know. I mean, in a fun way, not in a serious way, if you don't know. Never mind. Dang, see? There is one who's stalking me. I don't know who is it. It's someone. I just don't know. And let's see the graph. Dang. See that? You see that? Oh yeah. I see that spike, my dude. Never mind. In equilibrium, we also learned that it is generally taking place in closed container, but not in an open container. If this takes place in an open container where the gaseous state is where the compound or an element is released in a gaseous state, we actually understand that it gets as it escapes out of the open container, and this does not satisfy the whole backward reaction that should take place. So yes. Also, in equilibrium, the Gibbs free energy or the change in Gibbs free energy should be 0. And what else can we go through here? Yeah, we're gonna learn some extra stuff actually. Let me just check if I missed anything. Reactions don't stop at molecular level, but occurs in opposite direction with same rate or speed. Yeah, velocity is same. I cannot forget that. The rate, basically, the rate of that reaction should be same. What else? At equilibrium, system approaches minimum and it gives the energy, spontaneous reaction. So delta gives energy, change in Gibbs energy. It's smaller than 0. Got it. My guy, got him. Yes, I got it. Even though no one's watching. Let's lock in. Right. Yeah, let's just lock in, my guys. Never mind. What equilibrium system approaches the minimum and thus gives the energy. That is the spontaneous gives free energy. Gibbs free energy Is greater than 0. 0. Okay, I can see that voice going through. Wait a minute, guys. I just want to go through. Is it so loud? Actually, wait a minute. Is it so loud? Okay, I'm gonna speak normally. Okay, I think this is fine. Actually, right? I will confirm it to myself that this is fine. Yep, this is fine. Let's go. Yeah, my boys, it's fine. It's super fine. We can see that. It is fine. It's fine. Just gotta go through it, right, my boys? You gotta go through the concurrent viewers. Yeah, my boys. Anyways. So this behaves as a reversible equilibrium that is possible. Ln is equal to 2.303, and boyam, we're gonna get that answer. We gotta check this out. We're gonna low and get an answer about this. So first of all, we need the idea. What is the idea we need to know? Is the equilibrium.
The equilibrium. Yeah, you need to know the equilibrium. Equilibrium. Man, stop with that noisy stuff, my boy. the, Basically, all the measurable properties should be constant, like pressure, concentration, volume, and forms, reaction, mixtures. Also, if you don't know, what exactly happens is that we know that when a reaction takes place, something takes place. What is that? The reactants gets converted into product. Yeah, it gets converted into a product, and this product gets mixed with a reactant that is actually left, and this product can again get converted into reactant because of the reversible reaction taking place. You should have the idea. Another thing is that we have graph of an equilibrium. There is one graph we need to know. I don't know how to show it to you guys, but I can say that in a verbal form. What is that verbal form? Is that there are, of course, we know that in a graph there is an x-axis and y-axis. I'm doing that same meme that I repeated on my third day, saying a speech for 8 minutes straight. I'm not sure. Maybe, could be 8 minutes straight. I'm not sure. I did a speech telling that f cos theta is perpendicular to r. Facts, you don't even know it, because of course I didn't mention that to you, right? Because the concurrent viewers are too low. Yeah, they are too low. They are. Currently I don't know who's watching me, but yeah, they're stalking me for real. Never mind. We know that there is a graph taking place. I repeat that 4 times. My guy is just a repetition of should I remain? No, never mind. I don't want to say that. That's gonna be crazy. So there's a time graph. Okay, there's a rate of reaction. We see that the initial and the final, meaning that the backward and the forward rate of reactions, they converge. Do they coincide? Yes, they coincide. They will coincide. See this? A graph goes like this, and boom, it coincides. It takes place. It's going through a coinciding stuff. That is the equilibrium graph, saying that the rate of reaction, the forward reaction, is equal to the rate of backward reaction, hence proving that the net rate of reaction is 0. Yes, you got it, my guys. You got it. I don't know who's talking me, my boy. I don't know who's talking. Let me just refresh. It says 2 watching. I don't know who is it. Bam. Never mind. I don't know who's watching me. I've got a shy, but never mind. Concurrent viewers. Those 2 viewers are W's, by the way. Hi, it's me. Oh, Horse XD. Yo! Ah, man. Who left? Yo, Horse XD. Welcome back, my OG. Let me type. Welcome back. Thanks, brother. I'm currently learning equilibrium, if you don't know. And technically, I'm gonna talk about the graph, and if you want you can leave. It depends upon you, because you're the main demanding part, my guy. You're just the one who's gonna concentrate. You're gonna make that super crazy stuff. Let's go. Yes. We're gonna make that more and more W's right there. Yeah. Anyways, this is a non-quiet live stream, meaning that this thing is gonna take place with no muting part, meaning that if you're studying here, then this might not be the best live stream for you to study. I had made other versions of my live stream, and there are gonna be a lot of stuff is gonna be taking place. And in the quiet live stream you can study. In the non-quiet live stream, I recommend you to basically have some fun if you want to. Okay, I'm gonna be non-quiet. I'm gonna go crazy. I'm gonna study in a very funny way if you want to, because I'm a goofy person. So let's talk about concentration versus pressure with time.
Let's see the graph between concentration and pressure versus time. This is time, this is concentration versus pressure. What if I said that these two things can coincide with each other? Does that graph makes possible? Yes, it makes that graph possible. It really does make that graph possible. Yes, it really does. You gotta make that thing inside your mind. You gotta make that thing. If you don't know, if you're a commerce person or if you're a humanities person, yet you're watching me, you're a cool person, man. I don't know. You're just a cool person. Never mind. So if you're talking about this, I was saying that it can coincide or it can be, separated by each other. What if they wanted to do some social distancing? What if they wanted to basically have be in the era of COVID-19? They wanted to do social distancing. Let them do it. Let them go. Let them be separated from each other. Let them cook, right? Let them be the rate of forward reaction and the rate of backward reaction. Let them be backward, or I could say that the concentration or the pressure, they can actually make social distancing, and that equilibrium can also still take place. Why? Because concentration and pressure is constant. For the equilibrium condition to be satisfied, we need to know that this should be that the concentration and the pressure should be constant. And what else should I talk about? Yes, equilibrium types. How can I forget that? Equilibrium can be classified into two types. One of them is homogeneous. What is this? Okay, my bad. Suppose I capture out some gas. I'm capturing some gas. I'm capturing some gas out of the atmosphere. I'm going to talk about a homogeneous equilibrium, okay? Suppose I just captured some nitrogen, because 78% of atmosphere is nitrogen. I captured some nitrogen. I also captured some hydrogen. How can I capture hydrogen? By hydrolysis, is that fine? I don't have hydrolysis process. Very weird process. Hydrolysis. What? Hydrolysis? No way. How can I do that? Anyways, let's just imagine, because we have hydrolysis process. Let me take nitrogen. Let me take hydrogen. Combine them. You get what? Ammonia. Yes, you get ammonia. How do you do this? First of all, if you don't know what is a mole, it is basically 6.602 into 10 raised to 23 particles, or you can say ions, or you can say atoms present in that one specific substance. You can say one specific substance. Yeah, guys, I'm not joking. That one specific substance is there. It's present together, and therefore you get an idea. Okay, what do I mean by this? So homogeneous equilibrium is basically a reaction where you study that gaseous states, the reactants, will also form a gaseous product. This means that the reactants are having the same state and the product is also having the same state. That is straight up homogeneous. What about heterogeneous? What can you talk about heterogeneous? Suppose I take calcium carbonate, which is a solid state, which is in solid, okay? I'm reacting it inside a closed container so that it could be a reversible process for sure, right? I don't want this to be an irreversible. I don't want that to be irreversible. Yeah, I want that to be reversible. How do you make that reversible? Gotta make that sure, my boy. So first of all, in order to make that reversible, you gotta make that item put in your brain. My God. Lock in, la la lock in. Yeah, this is a non-quiet mode. Non-quiet. Let's go. Yes, let's go, my guys. We gotta do it. Oh, that is so cringy, bro. That is super cringy. Damn. Anyways, as I was talking about equilibrium can be classified into two types: homogeneous, heterogeneous. What is heterogeneous? Let me take calcium carbonate. Imagine there is a calcium carbonate in my hand. I put it in a closed container. I don't know. Let's take a pouch, suppose. I'm gonna put this calcium carbonate into a closed container.
I closed this. Okay, I closed it. I closed it. I closed it. Oh no, wait a minute. What's going on? Oh man. Let me reload this because I know that nobody's watching me now. For sure. Yep, nobody's watching me. Taking that plates, huh? No, 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 don't do that, don't do that, don't do that. Lock in, my guys, lock in. We're gonna make that study fun. I'm gonna make that study super, super fun, my guys. I'm not gonna fake that up. We're gonna make that surety. See, heterogeneous equilibrium. Reactants forming products, products forming reactants. What do we get the idea? Basically, the reactants, yes, they form products, of course, but what is the difference? The states are different. Suppose the calcium carbonate, which is a reactant, will form a product, meaning that a solid state, that is the calcium carbonate, will form another kind of solid state and a gaseous state. Yeah, CO2, carbon dioxide, the thing that I'm exhaling out of my mouth. You see that? You wanna hear CO2? Hear it. Sorry for blowing my mic. I'm sorry if you're hearing headphones. Sorry for blowing up your ear. I just wanted to show you, and I wanted to make you hear that CO2. Got it? That CO2. I blew it into your ears, I guess. I'm so sorry again. Or into your speaker, because I'm not sure whether you're wearing a headphone or not. There are three equilibriums types, okay? Based on homogeneous and heterogeneous. We talked about that. We talked about states. Now let's talk about something which we need to know. Physical, chemical, and ionic equilibrium. What is physical equilibrium? Why are we studying physical? Is that related to physics? Yes, of course, it is kind of related to physics because it's talking about physical change. But why are we studying this in chemistry? Because it's talking about a bit of matter. Yes, you see, chemistry is the study of composition of this matter thingy. Yeah, it is the study of matter. It is. So let's start it on. Okay, physical equilibrium. The changes in states that take place is known as physical equilibrium. That is achieved through a physical process. Could be any kind of, you can say fusion, that is melting, or it can be vaporization that takes place, or any other thing you can think of. Okay, you gotta use your brain here. You gotta use your brain. Chemical equilibrium. That's the next part of equilibrium. You see, I'm gonna give you a best example for an equilibrium. Okay, suppose you're a kind of a person who's basically studying. Okay, you keep that mindset and you say that I'm gonna study very hard today. I'm gonna be so productive. I'm gonna go forward. You say that you're gonna go with a really big motivation, and then you say, "Bayam, I'm doing great." But once you take that break, there is a point where you reach that you stop studying, and then you get demotivated at the end, saying that, "Oh bro, oh gosh, I missed a lot of things, I missed a lot of times, dang, oh dang, I missed it." That is equilibrium. Yes, that is equilibrium. What I mean by that is that I said that the concentration is basically constant. The net rate reaction and the net rate reaction of reactants and products are equal. They are equal, yeah. That's why. So whenever the concentration is actually, the concentration is not equal, by the way. Just remember that it could be constant, but not all the time equal. That's the main thing you should know. So I've just wanted to give you an example so that you can relate it to it. Yes, even though if you're a commerce student, humanities student, or any other kind of student, I'm not sure, you might have the idea. Now, chemical equilibrium. Let's talk about the chemical equilibrium. Yeah, let's talk about it. Why do you want to not know about it? Come on, man. Just come here. Just wait. Okay, you're a really good person. Come on, I'm gonna even pat on. Okay, let's pat on you. Okay. Okay, let's go. Chemical equilibrium.
So these are the kind of process that can be achieved through a chemical process, of course, a chemical reaction that takes place. Like, how should I explain this? Haber's process, yeah. The nitrogen. I took nitrogen, and I got hydrogen through hydrolysis of water. I got these both combined through an energy applied, and I got ammonia. Okay, I got 2 moles of ammonia. If you don't know what is a mole, it is 6.602 into 10 raised to 23 particles, ions, atoms, whatever you want to call it, present in that chemical substance. That's the amount. Yeah, that's the amount. If you don't know, why is it so? Like, why are you saying exact 6.602? What is that meaning of that being as a standard amount? This is because it is basically 1/12 of carbon 12 isotope, meaning that 1/12 of carbon substance is basically having these many particles. 6.602 into 10 raised to 23. Yeah, you know what's next. Wait, am I saying wrong actually? No, I don't think so. Come on. No, oh wait. Oh yeah, I did say wrong. Do I deserve a punch? This is a punch. Say hello. Hi. Ouch. I'm serious. Oh. Oh. Ow. That is crazy. Ah. That is strong. Ah. That really hurted. For a legend. Okay, I think I'm going off track. Let's talk about chemical equilibrium. I'm going off track, my bad. So PCl5 can be converted into PCl3 and a chlorine gas. Yeah, you can convert that PCl3 into Cl2, and that's how you're gonna get the idea. Yes, technically that's a really great way to understand the stuff. You're gonna need to know. You're gonna make that possibly a great idea to know it. Yes, 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 yes. Yes, the chemicals will get converted into products, and those reactants into products are basically undergoing through chemical reaction. That is your basic equilibrium that I'm talking the whole time. Chemical equilibrium. Another kind of equilibrium that I'm talking here is going to be the ionic equilibrium. What is ionic equilibrium? Easy. It's a very easy question to talk about. Suppose you have acetic acid. You have an acetic acid, suppose CH3COOH. Yes, you have CH3COOH. 6.022. Okay, I have an ionic equilibrium, and wait a minute, guys. Let me just go through my channel, and I'm gonna reload this. No problem, it's fine. I mean, we are getting through somewhere, are we? Yeah, it's going fine. I mean, yeah, let's go. Yeah, let's go. Let's do it. Let's lock in. Anyways, so what I was talking about here. Let's talk about it. So ionic equilibrium is basically suppose you have an acetic acid. You know how strong it is. It's basically having a vinegar like smell. Oh, I burned my nose. That is pungent smell. Oh, this is so sour. That is vinegar, and that is acetic acid. If you actually do a reaction, you'll get actually the acetate ion that is given here as a CH3COO minus ion. Another ion that we'll get is actually hydrogen ion, that is H plus ion, not hydride. Hydride is different, it's H minus. By the way, did I talk about types of physical equilibrium? Can we go through that? Yes, of course, go through it. So converting from solid into liquid, that is fusion equilibrium, right? Yeah, technically you can say that. Basically we have learned melting point, and we also know that it can be said as freezing point. Yeah, freezing. I got freeze. Oh no, I'm stuck. It's too cold here. Never mind. Room temperature ain't that cold, boy. Room temperature ain't that cold. Okay. So converting this rate of fusion of solid is basically equal to rate of crystallization of liquid. What? What is even that? What even is that? Solid is getting converted into liquid through a process called fusion or melting. Of course, that's a reaction. I would say that it is a forward reaction. Okay, bam, we got the idea.
But if you want to know another kind of reaction, then there is known as backward reaction. Yeah, backward reaction. It gets converted from this to this. What is that? Crystallization. Liquid gets condensed. Not liquid. Sorry, it says condensed. My bad. It gets free. It freezes and becomes a solid. That is a crystallization, and that is known as backward reaction. So that is also a solid liquid equilibrium. Yeah. Now let's talk about liquid vapor equilibrium. Yeah, we need to know liquid vapor equilibrium, shall we? Yeah, you might be knowing. You wanna know that maybe. It's very important for you guys to know that. That's why, because if you really know about this, then that's really great idea. Right? Okay, so equilibrium, liquid vapor. What does the liquid vapor equilibrium talk about? That the liquid gets converted into gas. Yeah, this liquid, suppose I have H2O, I boiled it at 100 degrees Celsius, I got it suppose into a gaseous state. Yeah, this wiggly thing you see, wiggling, my wiggly hands. Yep, yeah, my wiggly hands. It goes up, taking up, and that is how you gotta get the idea. One minute, guys. Anyways, let's lock in. Let's just lock in. You know what? Let's just lock in. I'll go with full less volume. Okay. We gotta know that it's not only solid gas. It could be like solid and liquid equilibrium. There's liquid and solid solution, solid liquid solution, solid solute plus liquid solvent will give you solution. Is that fine? Yeah. Come on. Let's know that. We gotta know it. We gotta get the idea. We gotta need to get this freaking thing one idea. Let's go. My boy knowing it. Speaking Asian so that you can understand it, my boy. Chalo. Solubility of gas in liquid. That's what I have explained overall. So there exists an expression involving concentration of substances. Henry's law. Henry's law will be studied. Okay, should I talk about a 12th standard concept? It is known as Henry's law. You will not learn it in 11th, but of course, if you're a humanities or commerce student, you will never ever learn this thingy. But if you're a science student, then you will learn this in 12th. This is known as Henry's law. The solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature and directly proportional to pressure. You may have got the idea right there. Oh dang, that's a great stuff and strategy right there. Yes, it is, my boy. It is. You need to know that idea, or else how will you get the idea, right? So we need to just think about this. So let's talk about something known as active mass. Active mass is basically a concentration of it can be represented by small letter a. This letter small letter a. So small letter a it is represented by this kind of quantity known as active mass. Is that what you're thinking? Mass? Are you thinking of mass? No, it's not mass. Active mass is basically not mass. It is actually not mass. Yeah, it's not mass actually. Then what is it exactly? What is it? What are you talking about? So this thing, active mass, is basically given here in liquid solutions, pure solids and liquids, and even in gases. In pure liquid solutions, you will use active mass in terms of concentration. Yes, not this concentration. The liquid solution concentration, the solute concentration. You might have got it. Another thing we gotta know is gases. You see, gases not only depend upon
this concentration, they will also depend upon the pressure. So you're gonna use pressure for active mass form. Okay, so it's not actual mass, it's basically concentration, or it can be expressed in terms of pressure. In fact, it's not there in the syllabus, but it says that it is also expressed in terms of mole fraction, that is chi, you know, right? If you don't know, it's fine. um that's what we need to know. And for pure solids and pure liquids, the active mass is 1. It is given as a unity, that is 1 actually. And this active mass is basically an intensive property, meaning that it does not depend upon does not actually depend upon the quantity and size of the matter. So you should know that it is an intensive property if you're a science student. Okay, so what should we know next about this active mass? You see, there's a law that is talking about active mass. Yes, let me read that out because I don't know it by heart, and I really don't like doing that. So it states that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of masses. Can we do this a little bit through practice? Because yeah, I might have to like put a derivation based on this. So I know the derivation, and it is actually easy how to do this. Derivation in chemistry? What do you think of, man? Chemistry is also like, physics step bro, step sis, I'm not sure. You can say twin also. Dang, my boy. Okay, let's keep that pen here. I don't want this pen. I'm gonna use that pen. I gotta use this pen, okay? Let's use it. So it states that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses, based on concentrations or pressure and of the reactant substances, raised to the power of equal to the stoichiometric coefficients of a balanced reaction. Meaning that, suppose there is a reaction that says 2a plus 3b. Okay, 2a plus 3b is reacting to form 4c, and since it's a reversible reaction, we can say that 4c can also again form 2a plus 3b. Now 2, 3 and 4 you see in this reaction, or you can hear from me, is basically this reaction. Okay, this thing I'm not sure how I can show it to you, but this is kind of first part. Damn, this is gonna be really difficult. Yeah, this is gonna be. Can I show this to you? Not sure if it is visible. This thing, this one, yeah. This thing is the reaction. On the reaction, we see that A, B, and C are substances that we can actually observe through, and A is basically another fun thing I wanna know. Got that choking through my mouth. So 2a, I'm gonna write this off. So rate can be written as, this is basically the speed or the velocity that's actually depending upon the mass action or active mass that actually has these two substances concentration. We multiply them, we get the coefficient of these power as their exponents. So that is rate directly proportional to a, and this directly proportional to into b, and that is a 2 and that is 3. Bam, we got that, did we? Yes, we really got that. That is a w right there. That's a whole lot of w's right there. Yeah. Anyways, we need to know that this equilibrium is written as stoichiometric coefficients. Yes, it is. The rate of the forward reaction can also be written as directly proportional to, suppose I have this reaction AA plus BB plus CC plus DD. What are you saying? Ain't no way you just said DD, did I? Nah, man, I'm not being sus, come on. I am being fairly healthy. I'm a family-friendly person. How could I say that? Come on, man. Be serious. Oh my god, no. You're thinking something of that related to the last product. That is DD. I got it. Very suspicious. Rate of forward reaction is directly proportional to A into B. That is raised to small a raised to small b. And rate of backward reaction is basically capital C into capital D. The capital C raised to small c, capital D is raised to small d. We got that answer as this one. Now,
we gonna need to know that this is in proportional sign, so we gotta put the constant. Can we put the constant? Yes sir, yes please, we can put the constant. And the constants that we are gonna put is the constant, rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction. Yes, rate constant of forward reaction and rate of constant of backward reaction. The rate constant, can I write this out so that I can easily like set this thing up? So wait a minute. Can I like focus? I mean, I need to focus, my dude. I need to like get the ideas. I need to like get that stuff take out of here. Yeah. Let's just do it. Okay, looks very weird, but let's just do it. So, we have the forward constant. You got this kf into a small a b small b is equal to k b capital C raised to small c capital D raised to small d. So can I write kf by kb is equal to capital A into capital B with this raised to the power. And no, wait, let's do that with product by reactant. We're gonna need that product first. Yeah, we're gonna need that product. Let me just put that up. Kf by kb is equal to capital C, and that's C right there, capital D right there, and capital A with the small a right there, and we got that capital B with small b right there. Yeah, let's go. We got it. Oh yeah, we got it, my boys. We are clicking through it. We are making it. This is possible, guys. This is possible. Let's do it. I'll motivate you for once, saying that if you're watching my live stream, you're a kind of person that I don't even know you, because you might have not chatted yet, or you might even stalk me. I'm not sure who you are. But I know that for one moment you can do it. You can actually do it. I know I'm kind of getting distracted, but there are some viewers watching me. They're like, thinking about this. So we need to know based on this. We need to have that idea. We need to check this. We need to have the idea. We will have to become disciplined. Even though my motivations are trash, by the way, if you don't know, you can still achieve it through discipline, because discipline is something which is a vector quantity. It ain't a scalar, man. If you have a direction of being an ambitious person and applying that idea, or basically being a vector quantity, you're basically applying that direction and having that idea, oh yes, I can follow this, I have to, then you gotta use the discipline. How do you become disciplined? How do you exactly become possibly more and more disciplined a person? In order to become a disciplined person, you should always remember that being a disciplined person, meaning that you should always remember to manipulate your brain. You gotta manipulate it. You gotta show that you have that capability. Show it. Just do it. Yeah, we gotta do it. Anyways, let's just do some questions. Shall we? Yeah, we gotta. And yeah, we got. How did we get the constant equilibrium? The reason and the method we got the constant equilibrium is because we divided the product, capital C, small c, capital D, small e, and divided by capital A into capital B, small a, small big. Right there, my boy. Right
there, my boy. It is weird actually, yeah, it's just weird. So you need to understand that this is gonna be crazy. Constant equilibrium is equal to what? We got constant of forward rate constant, that is 8 into 10 raised to 3. Sorry, that is not given like that. You deserve it, right? Do I? No, I don't deserve it because I'm trash person, am I? It's 2 into 10 raised to cube. Cut that out. Put this, and we get the constant equilibrium as 4. We get 4. 4 is the answer. 4 is the answer. Anyways, law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. We gotta know what is this. So let me just read this out. The ratio of product of active masses. Yes, as I have said earlier, this is a ratio of products and reactants. Yeah. Hi, Horse XD. How are you? How's life? Yo! You there? Oh, what's going on? Wait a minute. Uh-oh, there's going something wrong. Oh, yeah. No, don't do that. Yo, can you hear me? I think there's something going on to my PC, to my laptop. Wait a minute. There's a lag, I guess. Even though it says excellent connection, there's a lag. I don't know what just happened. Literally darkened out the screen. Wait a minute, guys, there's a lag. Do you guys experience the lag? Like, is there any problem in the video? Yes, if you can hear, then that's fine because I checked the audio. It's fine, but then it says that there is a problem in the video. What? Chat rate 2. Yeah, it is chat rate 2. So, given here? Okay. Never mind. It's working. Excellent connection. So, where were we? Yeah. Here we go. We gotta start with that. We gotta make that sure. We gotta make that checked out. So, carbon dioxide, or we're gonna make that. Wait. Did we complete this topic? Oh yes, we just completed it. We gotta make another derivation. Let me do that first. What's the derivation, by the way? Let's put this Casey. Hey, don't think of that girl Casey. It's not Casey. It's constant, right, in terms of concentration. It's not a girl, man. It's not a girl's name. Casey is not a girl's name. It is basically a equilibrium constant based on concentration. That is what Kc means. And Kp, it means that basically, like, you're actually talking about pressure. On the basis of the pressure, you're getting the terms. Yeah, you're basically getting that on the terms of pressure. Yeah, bye Horse XD. Have fun. Have fun, because I know that there will be holidays upcoming. Oh yeah, my voice. Yeah, of course, my voice is being normal. So, what should we talk about next? What's next? Let's talk about the next thingy. Let's talk about the derivation. So Kp or Kc, let's suppose I take this PV is equal to nRT, meaning that I'm gonna put an ideal gas equation. Pressure into volume is equal to number of moles into universal gaseous constant into temperature. Whew, blast. Ow. That really blasted off. Did it? Maybe. Did it? Yeah. Could be. It could be blasting off. What is going on? What's going on? What? Wait a minute. Huh? What? What? Oh. Okay, so we gotta need to have the idea.
Anyways, oh my god, PV is equal to nRT. Yay. So pressure can be given this n by v is into RT. What does n by v give us? That gives us molarity or the concentration. So can I write this as C or M? Depends upon you. Depends upon you, my boy. My boy, this depends upon you. If you don't know, you'll get the idea. PB is equal to B into RT. PC is equal to C into RT. PD is equal to PD. This one, ये मजा आ गया, बहुत अच्छा मजा आया, ये wait, what is going on? Oh, oh, what? Wait a minute, guys. What is this? What? Okay, basically this is my own channel, but then why is my live stream having these kinds of sounds? What? That is weird. Never mind. Man, come on, man. Come on. Think about it. Gotta guess. Gotta know the guessing part. We need to know the guessing part. That is a lot of slopes right there. Thank you for the slopes, my boys. Thank you for the slopes. We were doing it. So basically, we need to have the idea of what we are doing. First of all, we need to know that pressure is taking place. So how do we say this? How do we actually convert this? How do we want to talk about it? Let me just talk about this, and then I will go with boom and bam. Kp is equal to ART, right? ART is PC, PD, PA, PB, C, D, A, and B. My voice is broken out. Let's talk about that later. Later, so we gotta know that, okay? So, PA, PC, PB, PC, PD. Okay. So this is gonna give us concentration of C, RT, raised to C. Then that gives us D, RT, and that gives us raised to D. This goes similar for the A and B too. It goes similar for the A, and what does it do? RT. This thing will get the A part. Yep, this will get to the A part. We may have the idea, and we may get this stuff out. So yes. So ART, then B, then BRT, and then raised to B.
Yes, yes, yes. Got it, got it, got it. I got it. Yes, I got it. I got it. So BRT, and therefore we get this. Let me just adjust my camera, and bam, we gotta need that shirt because we need to get the idea. So soon enough, I'm gonna start my lecture off because I think I almost revised a lot of topics from Equilibrium chapter. So let's see what else we have to do. We gotta take that C, D, all D, A, small a, B, small b, into RT, then CA plus D minus A plus B. Yup. Yes, my guys. We got it. So that's gonna be KP is equal to KC into RT into delta NG. Delta NG. Yup. My boy. We got it. No, let's find it. Nice. Okay. Okay, so we need to have the idea. Okay, we just checked that out. Now let's go with the rate of law of mass, active mass. We did this. We are already revised all that stuff. All the stuff. मोल बता सकता है, वॉल्यूम बता सकता है। Let me charge this up. By the way, if you want to, I'm gonna give you a sneak peek of my live lecture that I'm gonna do, and make sure that you know Hindi because this is given in English. So yes. Oh yeah, this is gonna be super chaotic.
इसका पावर 2, इसका पावर 3, NH3 की पावर। अब ये चलो, कैलकुलेशन थोड़ी let's go. गंदी है, ये मुझे ही पता है, लेकिन हाँ, आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है ये बताना था मुझे, इसीलिए इसमें टाइमर मैंने नहीं दिया। ऑब्वियस बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा, बट एग्जाम हॉल में ऐसा गंदा कैलकुलेशन नहीं देगा, वो जानबूझ के थोड़ा सा मैंने जानबूझ के वो कराया। ठीक है, ये देख लेना, ये देख भाई साहब, अगला क्वेश्चन देख। अब इसमें तो तुम करो, ये देख लो, केसी और केपी के बीच में रिलेशन। बस ट्विस्ट क्या है ये याद रखना, केसी और केपी का फॉर्मूला क्या था, ट्विस्ट क्या है ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग थोड़ा सा सॉलिड है, और ये अमोनिया गैस है भाई, अमोनिया I गैस। accidentally bought अमोनिया one of गैस। my friend's pen and I really need to give this केसी और back. केपी का So, रिलेशन देख लीजिए, केसी so I'm so sorry, but I will give you as soon as possible. और केपी का रिलेशन देख लीजिए क्या बनेगा, केसी और केपी का रिलेशन क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। -1 by 2, I got -1 by 2, is that correct? If I get -1 by 2, so क्या होगा सर, B, यहाँ पर option जो B. लोग फॉर्मूला याद करके बैठे हों उनको पता हो केपी इंटू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है, लेकिन जल्दी जल्दी में डेल्टा एनजी 1 माइनस 3/2 करेंगे, दिस विल बी -1/2। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। अब भैया जल्दी जल्दी में आप ये ऑप्शन अगर टिक मार रहे बेटा, यही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर -1/2 होता है, बट ये ऑप्शन और वो ऑप्शन में डिफरेंस है, इस ऑप्शन और उस ऑप्शन में डिफरेंस है बेटा, ध्यान से Kc और Kp, अच्छा KC है, इधर Kp है, इधर Kp और गार इधर है। KC अपोजिट दिया हुआ है। सर इसको मैं क्या Kc is लिखूंगा? equal to Kp. C. My bad, it's Kc fine. is equals to Kp We were correct upon honestly, RT but then we power got this wrong, so that's fine. -1/2। Kc की वैल्यू को क्या लिखूंगा, Kp इंटू RT की पावर -1/2, ऊपर चला गया। सर यहाँ पर वो जानबूझ के Kc और Kp का रिलेशन जो तुम पढ़ के गए वहीं पर कंफ्यूज। I'm doing my live right now and it is on mute. This is gonna be crazy. It's given in Hindi, so yeah. आंसर B नहीं होगा, C होगा बेटा, यही सब ट्विस्ट। अरे साहब फिर से फंस गए, सोचो। अरे Silly mistake disorder. ऑप्शन देखते टाइम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि आंख बंद करके ऑप्शन टिक मार रहे, भैया खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सामने मुझे पता चल रहा है कि ये भैया इतना आसान सब है, लेकिन सामने वाला तुम इसको और उसको बराबर कैसे मान लिए भाई, मतलब तुम्हारे हिसाब से Silly mistake disorder हो गया सर। और ये सर। दोनों जो होते हैं 4 Silly into x mistake is equals to y, सर ये दोनों बराबर ही तो है सर, क्या डिफरेंस है इसमें, x is equals to 4y और 4x is equals to y बराबर है, बाप रे बाप भाई साहब, मैं भजिया उड़ाती, हाँ सेम थोड़े ही ना होते, हाँ सेम थोड़े ही ना भाई, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलो ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो, आरटी की वैल्यू बेटा पहले ही दे दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, एट 300 केल्विन। Kp बाई Kc का रेशियो पूछ रहा है, Kp बाई Kc की वैल्यू किसके बराबर होगी, RT की पावर डेल्टा Ng। बेटा इन तीनों रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए और इस रिएक्शन के लिए Kp बाई Kc का रेशियो पूछा जा रहा है, बता सकते हो Kp बाई Kc का रेशियो क्या होगा, Kp बाई Kc का रेशियो क्या होगा, इन तीनों रिएक्शन के लिए Kp बाई Kc का रेशियो क्या होगा, जल्दी से जल्दी। क्या आएगा सर, पहले वाले में तो डेल्टा एनजी की वैल्यू ही RT 0 है यहाँ पर। तो दैट मींस Kp is equals to Kc। Okay, so basically, Kp by Kc is equals to 1। so you got to know that this is the way the answer and great method.
वाले में तो अच्छा 1 है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन तो, लास्ट ऑप्शन तो हटा ही दो, पहले का आंसर 1 ही होगा। जैसे तो डेल्टा एन जी बड़ा होना चाहिए और छोटा रहना है, तो ये भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव होने का चांसेस भी हो सकते हैं। के पी के सी बराबर भी है, बराबर में अगर आगे तो 1 रहेगा तो हाँ हो जाएगा सर। आइडिया मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है। जैसे ये डेल्टा एन जी जो है वो ज़ीरो होगा। अब डेल्टा एन जी जो होगा, मान लो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये माइनस में आ रहा है, ये नहीं चलो को पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें के पी जो है के सी से बड़ा है। के पी बाई के सी करेंगे तो हमें एक होल नंबर मिलना चाहिए, दूसरे का आंसर निकाल लें तो कुछ चांसेस हैं। यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू देख लो, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो सर यहां पर के पी बाई के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी की पावर 1। सर आर टी की वैल्यू 24.62 दिया है, तो सर सी ऑप्शन हटा दो, सी ऑप्शन हटा दो। रही बात इसकी, तो यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 4 माइनस 2 है क्या। सर यहां पर के पी बाई के सी अगर लगाते हैं तो के पी बाई के सी किसके बराबर होगा, तो दैट विल बी आर टी की पावर -2। -2 मतलब 1 अपॉन आर टी का पावर 2, 1 अपॉन 24.62। बेटा ये वैल्यू बहुत कम होगी सर, ये 600 के बराबर तो नहीं होगी, ये 600 के बराबर तो नहीं होगी। 1 अपॉन 24.4 600 के बराबर तो नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिना कैलकुलेशन के भी करेक्ट आंसर मैच कर सकते हो, बिना कैलकुलेशन के भी करेक्ट आंसर मैच कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज बी। कौन सा आंसर होगा, बी। बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले वाले में डेल्टा एन जी 0 है, केपी अपॉन केसी किसके बराबर, आर टी की पावर। अब सर सेकंड ऑप्शन में ये देखो, अब ये कैसे सर कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि अरे भैया मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 1/25 भी 0.04 होता है। सर वो 600 कैसे हो जाएगा, 600 तो कभी नहीं होने वाला। आरटी की वैल्यू पहले ही दे रखी थी, ये क्वेश्चन हॉल में, एग्जाम हॉल में ये देख लो भैया, ये आरटी की वैल्यू पहले दे रखी है। तो भैया जल्दी से
सोचो ना, तुम टेस्ट में जाके ये गलती करोगे, घर वाले अलग ताने मारेंगे, आस पड़ोस वाले अलग बोलेंगे, तो बेटा ये तो हमारे आपस की बात रह गई। लेकिन रियलिटी सोचो कि यार मैंने कल पढ़ा है, अभी जस्ट कल पढ़ा है सर के क्लास में, और आज मैं अगर अप्लाई करने में आज उसको अगर सही से देख नहीं पा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोचो 1.5 साल बाद किसी एग्जाम हॉल में किसी तीसरे के घर स्कूल में जाकर वो अलग से इन्वायरमेंट में मैं कैसे ये सारी चीजें अप्लाई कर पाऊंगा, कैसे ये सारी चीजें अप्लाई कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा जिन लोगों का, अब देखो कुछ लोगों का होगा, जैसे कुछ लोग, एक बच्चे से मैं कल बात कर बोला, सर मेरी स्पीड बहुत स्लो है। मैं तुमसे मना नहीं कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, स्पीड स्लो है, मैं ऑब्वियस हर एक का अपना अपना पावर है, हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है। लेकिन भाई अगर तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारी स्पीड स्लो है, तो भाई तुम एक बार तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है कि भाई साहब अगर आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते तो जब आप स्लोली पढ़ रहे हैं तो एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ जाइए, एक ही बार करिए, लिख लिख के अच्छे से कर जाइए। अब किसी की स्पीड फास्ट है तो 2-3 बार कर लेगा, जितने टाइम में तुम एक बार करोगे। लेकिन कंपटीशन में जाके आप ये नहीं बोल पाएंगे कि सर मेरा स्पीड ज्यादा है, उसका स्पीड कम है। सबके लिए 3 घंटे का ही पेपर होना है। तो भाई साहब प्रैक्टिस जरूर करिए। जो लोग भी गलती कर रहे हैं प्लीज बेटा मंडे को मैं दोबारा जब मिलूंगा तो कोशिश करना कि उससे पहले सब कुछ ये क्लियर कर लिया जाए, सारी की सारी चीजें। क्योंकि जैसे जैसे देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैं खुल के बोल रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी क्लास में से 2027 में ना रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग अभी ऊपर नीचे भटक रहे होंगे ना, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ बेटा, ये नोट्स अभी लिखा रहे हैं, 2027 तक वैलिड है, जाके देखना पेपर में यही से आएगा। बस अप्लाई करना तुम्हारे हाथ में, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा। चलिए जो लोग भी है बेटा, इस हफ्ते का टारगेट है कि इस हफ्ते में जो भी चीज हो रही होगी सब कुछ आज रिवाइज करेंगे। मंडे की क्लास से पहले भैया सब कुछ करके आएंगे, क्योंकि भैया मंडे से अगले वीक में ये चैप्टर बहुत ही अलग मोड पे चला जाए। चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं केसी लिखूं, चाहे केपी लिखूं, चाहे के काई लिखूं, तुम्हें पता चल गया है कि ये तीनों तरीके से मैं लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया सर, तीनों तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब सुनना ध्यान से क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, ये सुनना क्या बोला जा रहा है। केसी लिखो, केपी लिखो, के काई लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो अगर तुमसे बोला जाए, ये देखना, अगर मैं बोल रहा हूं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक बात बताओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहला फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर आप रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल दोगे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप लिखने का तरीका बदल दो किसी रिएक्शन का, हाँ बेटा अब यहाँ से नोट करना है, अब ये चैप्टर कल, हाँ क्वेश्चंस हो गए, अब इधर से नोट करना है, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल दो, मतलब ये देखो अगर आप ए से बी जा रहे हो, ये देखना एक बार, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं इसको K1 लिख दूं तो ये K1 की वैल्यू क्या होगी, B/A होगा। B/A होगा क्या। अगर आप रिएक्शन A से B जा रहा है तो याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिख दूं तो ये किसके बराबर होगा, B/A के बराबर होगा। किसी को कोई डाउट? कल सर ये किसी को डाउट कुछ? A/B प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बेटा इसको देखना एक बार, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब रिएक्शन रिवर्स कर दिया, या ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन कर दिया। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अब ये सब वर्ड तो आपको पता है ना, और ये रिवर्स रिएक्शन लिख दिया या बैकवर्ड रिएक्शन लिख दिया या फिर बैकवर्ड, जैसे ही मैंने उल्टा लिखूंगा, क्या आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो? सर ये किसके बराबर होगा, A/B के बराबर होगा। और कितने लोग हैं जिनको ये दिख रहा है कि सर एक काम करिए, आप इन दोनों को, कितने लोगों को पता चल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर मैं सर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं बैकवर्ड रिएक्शन से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। मतलब देख लो क्या कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है K2 की वैल्यू 1/K1 है। देख ले भाई, सर बैकवर्ड रिएक्शन का, पीछे वाली रिएक्शन का या रिवर्स रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो, सर बैकवर्ड रिएक्शन का या रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो
तो सर फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर देना। देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में सेम टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में हमने सेम टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था, रिवर्स करने पे रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। याद रखना रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। पक्का? रिएक्शन को रिवर्स किया सर, फॉरवर्ड के बदले बैकवर्ड रिएक्शन लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा, 1/this हो जाएगा। अगर याद करो तुम्हें एक रिएक्शन मान लो ऐसे दिखाता हूं, ये देखना, अगर मैं इस रिएक्शन का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देख लीजिए, अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 100 लिखता हूं और इंथैल्पी की वैल्यू, इस रिएक्शन की इंथैल्पी की वैल्यू -100 लिख देता हूं, क्या तुम्हें लगता है अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिएक्शन रिवर्स करोगे तो देख लो भाई साहब 2 चैप्टर मिल रहे हैं, चुपके चुपके नहीं, सबके सामने मिल रहे हैं। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो सकती है, बताई जा सकती है। अगर भाई साहब एक बहुत प्यारा डाउट आया है कि नोट करना है कि नहीं, देखो खाली, हाँ मन में ख्याल आए, देखो खाली, अबे कितना भाई कितना स्लो, जल्दी छाप यार, कितना स्लो कर रहा है यार, एक लाइन नहीं लिखा है मैंने, बस रिएक्शन लिखी है। लिखने का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका, अगर आप फॉरवर्ड लिख रहे हो, बैकवर्ड लिख रहे हो, उल्टा कर दो, हो गया। ये देख क्या आंसर आ जाएगा भैया, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा इस रिएक्शन का क्या बोलूंगा, 1/100। इंथैल्पी भैया क्या होती है, सिर्फ साइन चेंज करता है, याद करो इंथैल्पी सिर्फ साइन चेंज करता है। सर देख रहे हैं 2 चैप्टर मिल रहे हैं, हाँ 2 चैप्टर मर्ज होते हुए दिख रहे हैं, सर पता चल रहा है क्या बड़ी बड़ी बातचीत हुई थी। वंस अपॉन ए टाइम, हाँ एक्स को याद करके रोना तो नहीं आ गया कि अरे यार ये समोसा खत्म काहे नहीं हो रहा, देख रहे हो, याद करो, ये छोटी मोटी बातें याद आ रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। डेल्टा एच की वैल्यू -100 +100 कर सकते हैं, डन। सर रिप्रेजेंटेशन का मोड अगर आपने चेंज कर दिया, फॉरवर्ड के बदले बैकवर्ड कर दिया, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी बातचीत आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ, हाँ सोच रहा एच क्या होता है बेटा, अब रहने दो, एच क्या होता है, एच ऐसा ही है, एच मतलब हम और क्या, एच मतलब हम, समोसा हम लोग एक साथ खाएंगे, देखो इधर से हम लोग खाएंगे तो -100, हाँ सिलेक्शन के बाद खाएंगे तो +100, यही है एच मतलब क्या होता है। भाई साहब देखिएगा, ए भाई देखो इधर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, दूसरा तरीका, बहुत तगड़ा तरीका। बाबू देखना सर, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज पता है किस पे डिपेंड करता है, एक तो लिखने का तरीका बदल दो और दूसरा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शन। देखना किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला लिखने के तरीके पे और दूसरा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, ऐसे पैसे मतलब ऐसे पैसे डिपेंड कर जाएगा। देख लो सर, अभी एक रिएक्शन ली थी, जस्ट अभी एक रिएक्शन लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका मैंने बोला था K1 होगा, इसको मैंने लिखा था B/A, ऐसे लिखा था गाइस, हाँ इस ब्लॉग में देख रही है क्या चल रहा है। एक तो हमारा ब्लॉग जो होता है हर एक दिन कंटिन्यूअस होता है, हम लोग बस रात को सोने के लिए जाते हैं, फिर शाम को उसी काम के लिए मिल जाते हैं। कल हमने ये लिखना शुरू किया था, B/A लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा मैं कॉन्सेंट्रेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बोले प्रेशर, बेटा सब कुछ उसी तरह होगा। मैं केसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, केपी का भी एग्जांपल वैसा ही होता है।
बस याद रखिएगा, ये देखिएगा सर, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओह माय गॉड सर, याद करो दोनों साइड 2 से करेंगे, ऐसा कोई क्रांतिकारी मत काम कर देना कि इधर 2 से कर दिए इधर 2 से नहीं कर रहे, भाई ये काम मत कर देना भैया, क्योंकि बेसिक मैथ यही कहता है कि कोई चीज K2 की वैल्यू देखो तो क्या आप लोग इतना बड़ा बात सोच पाएंगे? ये क्या हुआ? K2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है सर? स्क्वायर, K1 का स्क्वायर आ रहा है क्या? K2 की वैल्यू क्या आ रहा है? K1 का स्क्वायर आया क्या? K1 का स्क्वायर आया क्या? आपने किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या इतनी बड़ी बात पता चल पा रहा है? अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं, उसकी पावर में चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? पावर में। सर देख लीजिएगा, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, अगर किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करते हैं देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स, याद रखिएगा, अगर आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? K1 की पावर n हो जाएगी। K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 की पावर n। अरे भाई यार तू भी मतलब तू है यार, अरे भावना जानते हैं, इसीलिए तो ये दिमाग जो है खाली ये देखने में लगा है कि हाँ सर हम तो जानबूझ के गलत करते, तुमको पता नहीं चला क्या आज तक? ये लग रहा है 2 वाला, इसको याद नहीं, समझ में याद, हम जानबूझ के करते हैं ताकि पता रहे कौन कौन इधर देख रहा है, किसको किसको रेफरेंस लिया है, मुझे पता नहीं है कौन है। और क्या भाई स्टाइल है जी, क्लास का अटेंडेंस चेक होता है, इससे पता चलता है कौन कौन कितना जगह हुआ है। और क्या प्रिंटिंग मिस्टेक देख रहे हो? ये देखिए, मतलब अगर किसी रिएक्शन को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर कितनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पावर में चला जाएगा। ये देखना, अगर भाई साहब अब कोई बोले सर हम तो डिवाइड करेंगे, लो भाई साहब लो भाई साहब बोला कि सर हम तो डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करने वाले को कौन रोक पाएगा? भाई साहब डिवाइड करने दो सर, डिवाइड करने दो, ये डिवाइड करेगा तो a की पावर 1/5 हो जाएगी। अच्छा यार करो This is crazy. This is crazy.
Yo, Weaver, wait for a minute. I'm kind of busy. It's important, so I'll come back as soon as possible, okay? Yo, Weaver, wait for a while. I'm coming back. It's important. So, yes, please wait for a while.
Yo, I'm right here. Sorry for the delay. I was just eating my food, and don't want it to disturb you guys like this. Plus, I will not be able to study like this while eating food because it's really difficult to attend a lecture while studying because I need to learn it. I don't want to revise or something. So basically, yes, I needed to learn the thing. So I hope you would relate with that and you will understand what I'm trying to say. So let's start. We'll go through this and we're gonna make that sure. Alright. Bam, let's do it. Do it. Do it. Do it. Three, two, one, and so you might see that my background is really very very dark. Yes, it is very dark. Let's go. ए की पावर 1/5 हो जाएगी। सर आपने किससे डिवाइड करा है? आपने A1 की पावर 1/5 के बराबर। आपने अगर 5 से डिवाइड करा है तो पावर कितना हो जाएगा? 1/5 बराबर। तो याद रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इफ अ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय m से डिवाइड कर रहे हो, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स 1/पावर 1/m। कितना हो जाएगा? पावर 1/m। इतनी बड़ी बात पता चल रही है, 5 से डिवाइड किया। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना, वहां इंथैल्पी के साथ खेलते थे, आज इक्विलिब्रियम भी खेलना चालू कर गया। ए बाबू, क्या चल रहा है सब? अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किए तो इंथैल्पी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन यहाँ पावर में चला गया। सर यहाँ 5 से डिवाइड किए तो इंथैल्पी 5 से डिवाइड हो जाता था, लेकिन सर ये कहाँ चला गया? पावर 1/5 चला गया। कुछ याद आ रहा है? देख रहे हैं पुराने जख्मों को याद दिला रहा है मास्टर। सर ऐसे, हाँ ऐसे कीजिएगा। ये पुरानी बात, हम तो इक्विलिब्रियम पढ़ने आए थे ये सोच के कि भाई कुछ नया कौन याद दिलाता है। याद आ रहा है, वंस अपॉन ए टाइम हेसा लॉ पढ़ा था, ऐसा हेस लॉ, लैपलास लेवाइजर लॉ, बड़ी बड़ी बातें की थी। याद करना भाई साहब, कॉपी अभी जस्ट नहीं बनाई थी, अभी कुछ ही दिन हुआ, अभी नया नया भरा है हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को, उसको जाके भी देख सकते हैं। कोई रिएक्शन दी हुई है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल H2 + I2 gives 2HI, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर भाई साहब n दिया है, इंथैल्पी की वैल्यू अगर हम बोले तो -400 दिया हुआ है। मैं कुछ बड़ी बातें बोलने वाला हूं, संभालिएगा खुद को। अबे कितना स्लो लिखता है यार, लिख ले भाई, इतना भी स्लो नहीं लिखना। अरे ये तो K1 K2 K3 बेटा मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ ना, ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम। अब सबको इक्विलिब्रियम K लिख दूंगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसको K1 लिख दिया, इसको K2 लिख दिया, इसको K3 लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन तो बेटा शुरू से लेकर यही था ना। इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर क्या हो गया? 2। इसमें आपने 5 से डिवाइड किया, पावर क्या हो गया? 1/5। तो इसको K1 लिख दिया, इसको K2, इसको K3, लिखने का तरीका डन। एक बात बताइए, थोड़ा देखिएगा भाई साहब, ये देखिएगा क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, क्या हो रहा है। बाप रे बाप, इतना गंदा गंदा चीज है। एक बात बताइए, थोड़ा देखिएगा भाई साहब, ये देखिएगा क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, क्या हो रहा है। बाप रे बाप, इतना गंदा गंदा चीज है। कभी रिएक्शन को जिंदगी में बैलेंस करना सिखाए, अब बोल रहे हैं खुद ही मल्टीप्लाई कर दो।
खुद ही डिवाइड कर दो, क्या जिंदगी हो गई है। एक है ना, right? इक्विलिब्रियम में मस्त हो थर्मोडायनेमिक्स गई पढ़ाए जिंदगी। जा रहे हैं, मास्टर ना हो गए ये लोग। हाँ, ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। समझ रहे हैं तुम्हारे दुख दर्द को, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा एच की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? सर रिएक्शन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ? ये क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, बता सकते हो? सर बता सकते हो? आप इतना मैथ काहे करवाते हो? माय गॉड, अरे बेटा हमारे पास, हम क्या करें, हम खुद सताए हुए। हम Damn, my हमको boy, खुद that किसी is ने पीसीएम भी crazy. दिला दिया था। हाँ, थोड़ा सा अंदर से इंजीनियर है, थोड़ा अंदर से डॉक्टर है, इसीलिए दिक्कत हो गई। पीसीएमबी के बाद यही होता, मैथ काहे करवा रहे हो इतना? देख रहे हो दर्द कितना है इसको, Meanwhile, इतना मैथ काहे करवा रहे हो? because I'm PCM नहीं people, बाबू, like, तुमको फाइनल थोड़ा ही ना बोल रही है। 10 की पावर क्या करना है, 3 हो गया तो ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये पावर में जाता है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। -12, ये देख लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 की पावर 1/4 हो जाएगा। boy. Really, bro? और ये कि अच्छा रुको। काटो 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 गन, काटो गन, नीला पीछे पिक्कला 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 पिक्का ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अभी क्या भी बोल रहा है, कुछ भी बोलता है, मार लो यार। कुछ भी बोल रहा है ये बंदा, कुछ भी बोल रहा है ये बंदा। ना हो गया सर, -400/4, -100 लिख सकते हैं। क्या इतनी बड़ी बात आप लोग कर पाएंगे? मतलब इतना तगड़ा चीज कर सकते हैं क्या आप लोग? यस सर, हाँ, कर सकते हैं, करने के लिए भी जिनको भी मैथ्स में दिक्कत है भाई, इतना भी गंदा मैथ्स ना है यार, इसको मैथ ऐसा बात। तुम फिजिक्स में कैसे डिराइव कर रहे हो जी? झूठ बोल रहे हो फिजिक्स में। हाँ, cos थीटा sin थीटा, हाँ कहीं भी ऐसे ऐसे। एक तो भाई मतलब देखते हो फिजिक्स वालों को भाई कैसे कर रहे होते, यहाँ पर लगाए। पहली बात, इतना टेढ़ा इंसान क्यों खड़ा होगा? ये ब्लॉक रखा है, खींच के नीचे ला दो ना। पीछे पड़े हैं, इसका देखो, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हाँ सर being ऐसा crazy with the बता vector रहा है resolution, my केमिस्ट्री boy. में मैथ का इतना करा रहे। फिजिक्स वालों से जाके पहले पूछो, टेढ़ा इंसान है और क्या। अंधेरा न्यूटन का इधर से उधर लगा दे, न्यूटन भी इतना मतलब, और क्या मतलब लगाए जा रहे हैं कि सर नॉर्मल जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। हाँ, mg जो होता है ऐसे होता है। अब जिंदगी आदमी mg cos थीटा sin थीटा में फंसी हुई है, ये बोल रहा है इतना मैथ काहे करा रहे। mg cos थीटा sin थीटा से तो ठीक ही है भाई ये मैथ्स। हाँ। mg cos थीटा sin थीटा से तो फार बेटा है, ठीक है। आर्मी ओए 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 एक तो टेढ़ा, आर्मी और ओए क्या। ओए एक मेरा दोस्त था, बोला भाई पता नहीं तुम लोग को दिखता है कि नहीं, ऐसे जो एंगल होता है ये वाला थीटा, ठीक है, तो ऐसे जो रखा हुआ है तो यहाँ पर mg लग रहा है, ऐसे ही बताते हैं ना ये लोग, ठीक है। ये mg इधर mg cos थीटा mg sin थीटा ऐसे करके लगता है ना सर, यही होता है ना, पता है कि। तो मेरा एक दोस्त बोला पहली बात यार, ये कौन इंसान था? न्यूटन क्या गर्दन झुका झुका के मेजर कर रहा था क्या कि भाई किधर दिमाग ज्यादा लग रहा है? ये कौन था ये इंसान जो इतना गर्दन झुका झुका के मेजर कर रहा है कि भाई साहब इसके परपेंडिकुलर, हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन mg sin थीटा, ये
मैं दोस्त का बात समझा। पहली बार तो मुझे भी लगा कि भाई गर्दन टेढ़ा कर करके चेक करना पड़ेगा शायद। बोला यार बताओ यार ऐसा करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिजिक्स वाले अलग जिंदगी जी रहे हैं ना भाई साहब। फिजिक्स वालों के हिसाब से वर्क डन क्या है, मतलब कोई कुली जो है वर्क डन 0 है। किसी कुली को जाके बताओ, छोटे भाई को बोलो कि बेटा एक काम कर छोटा भाई, तो एक काम कर यहाँ से 10 किलो का बोरिया उठा, यहाँ से ऐसे सर पे रख और यहाँ तक पहुंचा दे, 10 रुपए दूंगा। अगर तूने वर्क किया तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। 100 किलो जूल छोटे पर भाई के मोल। ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ना करे, पता चला छोटा भाई भी डेंजरस होता है। बड़ा भैया साइंस पढ़ने वालों भाई ये देख लेना, पता चला 10 रुपए का बहाना दे के उससे सामान उठवा के रखवा लिया, फिर उसको फिजिक्स समझा रहे हैं कि देखो बाबू ऐसा है, तुम्हारा वर्क तो 0 हो गया। हाँ तुमने तो कुछ काम किया नहीं, वर्क डन तो तुम्हारा 0 है, तो पैसा हो गया 0। भाई साहब कूटे जाओगे। छोटा भाई भी हथियार उठा लेगा, बोलेगा भाई साहब हाँ ऐसे कैसे, आज के आज, हाँ आज के आज सारा पर्दा खोलता हूँ इसका। ये सब हरकतें मत करना भाई साहब। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पहली बात मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे, कि सर उल्टा सीधा कर दिया तो भैया रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सर पावर में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पावर 1/5 हो जाता है। ऐसा कुछ कुछ करके हमने पढ़ा। अब तीसरी बड़ी बात बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, एकदम मतलब इतना खतरनाक चीज बताने वाला हूँ ना, कलेजा इसे बाहर निकल जाएगा, इतना तगड़ा चीज है भाई साहब। सुनिएगा, एकदम इमोशनल मत हो जाइएगा भाई साहब, इतना तगड़ा है, देखिएगा आंखों से आंसू ना आ जाए, ऐसा प्रोसेस बता रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें शायद ही आपने देखी। मल्टी स्टेप प्रोसेस पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। कैसे? सर ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम K1 लिखते हैं, K1 की वैल्यू B/A होता है। सर ये हमारा स्टेप 1 है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन। स्टेप 2 में क्या होगा? अगर स्टेप 2 में D से C जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 हो गई और K2 की वैल्यू C से D हो गई। सर एक बात बताएं, कभी किसी जमाने में वंस अपॉन ए टाइम हमने रिएक्शन को ऐड किया था। रिएक्शन अगर ऐड करते थे, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, कितने लोगों को ओवरऑल रिएक्शन पहले ए से सी दिख रहा है? ओ भाई साहब। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे, सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C/A आ जाएगा। और C/A अगर आप निकालना चाहते हैं तो C/A को क्या हम सब लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? और जानते हैं सर, एक बड़ी बात बताऊं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K1 × C/A तो डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो बेटा इंथैल्पी ऐड होती थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई। सर रिएक्शन को जब ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए से सी बचा। रिएक्शन ऐड कर गए, रिएक्शन ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो याद रखना सर, देख रहे हैं कैसी कैसी जिंदगी हो गई। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन कि भाई साहब अगर 2-3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। पक्का? आर यू गाइस श्योर? समझ में आया? क्या इतनी बड़ी बात कर दोगे? एक बड़ा क्वेश्चन दे दूं क्या? एक बड़ा क्वेश्चन दे दूं क्या? सर ये देखिएगा, C+O2 gives CO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है X। सर जान रहे हैं CO, 2CO gives CO2 प्लस कार्बन। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? बड़ी बात पूछ दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ दी गई भाई। ये देखिएगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर। इतना तगड़ा क्वेश्चन के लिए समझिएगा, इतना तगड़ा बात कैसे कर पाएंगे हम लोग। ये देखिएगा, 2C + O2 gives 2CO। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकलेगा? 2C + O2 gives 2CO, कैसे निकाल पाएंगे?
इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे भाई यार ठीक है ना, XY. एक बोला रिवर्सिबल साइन, अरे भावना को समझो यार तुम लोग, The answer is मतलब क्या correct. कर Would be रहे हो XY. यार। चलो निकाल सकते। अरे क्या होगा सर, रिएक्शन को क्या करेंगे सर, आपको CO किधर चाहिए, CO उस साइड चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड उस साइड चाहिए, रिएक्शन को पलटी मारेंगे, एकदम पलटी मारेगा रिएक्शन भाई साहब, पलटी मार गया रिएक्शन। So पलटी मारा, पलटी मतलब ऐसे opposite moving that is on the opposite side. So CO to CO. Got it. Got it. So we can say that we are applying Hess law in equilibrium also. Wow, that's crazy. Let's just remain the same thing. I'm gonna shift this up. That is CO2 plus C to CO. CO to CO gets cut off. Then we get 2C plus O2, reversible reaction, and that gives the product as 2CO. So that's the answer. What is this? 27. Why? Yeah, Why 27? You know room temperature how much? Should be 27. 25. Oh. Or use only fan.
know that this is the answer. 2Cu plus O2 gives as 2CO. That's the carbon monoxide stuff. But wait. We know that this KEQ, or the constant equilibrium, gives us X. The constant equilibrium here, by the way, is 1 by Y. So we are getting X by Y. That is X by Y. जैसे ही पलटी मारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया 1 by y। सर 1 by y हो गया, रिएक्शन क्या हो गया सर? आपने उल्टा क्यों किया? बिकॉज बेटा 2CO किधर चाहिए? प्रोडक्ट साइड। 2CO किधर चाहिए? प्रोडक्ट साइड। तो मैंने पलटी मार दिया इसको, और इसको जैसे ही रिवर्स करूंगा 1 by y हो गया। जैसे ही रिवर्स करूंगा 1 by y हो गया। और फिर CO2 देख लो, कार्बन भैया O2 इधर ही चाहिए था, इसको ऐड कर दिया CO2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? X। सर इन दोनों को ऐड करूंगा सर, देख लो CO2 से CO2 चला गया, कार्बन प्लस कार्बन 2C प्लस O2 सर, दैट विल गिव 2CO। सर रिएक्शन आ गया क्या ओवरऑल? और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? X by Y आ जाएगा। देख रहे हैं गजब का जी टैलेंट ना है भाई। X by Y आ जाएगा, X by Y आ जाएगा। तो बस यही है, X by Y निकाल दो तो इसी को बोला जाता है, यही है हमारे पास C प्लस O2 गिव CO2, 2CO प्लस CO2 प्लस। डन हो जाएगा सर। इतना बड़ा बात याद आ रहा है, कुछ बड़ी बातें याद आ रही हैं, ये सब कहीं किया हुआ कुछ लग रहा है। ए गाइस, कहीं ये सब बातें हुई थी, याद आ रही। वंस अपॉन ए टाइम, कभी किसी जमाने में ये सब इक्विलिब्रियम के पहले भी आपके साथ हो चुका है, शायद आपको याद आ रहा हो। वंस अपॉन ए टाइम इन थर्मोडायनामिक्स एंथैल्पी के साथ भी आपने ऐसा कुछ किया था, एंथैल्पी के साथ यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया था। बस वहाँ पर एंथैल्पी क्या होता था? साइन चेंज करता था, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन और देता हूं, अब देखिएगा S प्लस O2 गिव्स SO2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं दे देता हूं 10 की पावर 5, डेल्टा H की वैल्यू दे देता हूं -1000 किलो जूल्स। सर ये देखिएगा S प्लस P/2 या चाहे 2S प्लस 3O2 2SO3 सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट We got it. 10 की पावर डेल्टा H की वैल्यू दी है -2000 की। देख लीजिएगा, बड़ी बात बोलने वाला भाई साहब, ये देखना भाई साहब, बहुत तगड़ा चीज बताने वाला। कैलकुलेट, ए भाई कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम चेंज एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? देखिएगा, रिएक्शन देखिएगा भाई साहब, साथ में लिख लीजिएगा। इस रिएक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं आप? क्या बता सकते हैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी क्या हो सकता है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी बता सकते हो? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी कैलकुलेट करके बता सकते हो? देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से जल्दी कितना होगा भाई साहब? 2SO3. Is that correct? Let me check. Oh wait. SO2. Okay. Did we get anything wrong? No, okay, wait. Okay, got it. So 10 raised to 10. Daya.
Oh, that is 1 by 10 raised to 10 इंथैल्पी के काम because देखो reversed उल्टा करेंगे प्लस 1000 हो जाएगा उसके 1 plus बाद उसे 1000, so मल्टीप्लाई that is plus करेंगे 2000. प्लस 2000 हो जाएगा सर ये 2000 किलो And जूल then we get the constant equilibrium, my boy. Is this सामने वाली रिएक्शन को untouched? नीचे So वाली रिएक्शन को कुछ नहीं करना आपको सीधा सीधा लिख देना delta है H is equal उसमें बढ़िया to वही चाहिए minus 2000. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भाई साहब कितना है 10 की पावर 7 इसका Ah, yeah. एंथैल्पी कितना है भाई साहब माइनस 2000 है यही होगा Yes. अब दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करेंगे जब दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करते हो आप जब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे तो Cut यहाँ पर क्या होगा 2SO2 plus O2 gives बच जाएगा 2SO3. आपका फेवरेट रिएक्शन आपके सामने आ That is a K equilibrium 1 by 10 raised to 10 ऐड कर दीजिए और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे into 1 10 raised to 7 माइनस 10 into 10 की पावर delta 7 से H मल्टीप्लाई होगा and that will be 10 की 10 पावर raised to minus 3. इसकी एंथैल्पी निकालने That is great. जाएंगे सर इन दोनों एंथैल्पी Delta H is equal to 0 kilojoule per mole. सर इसकी एंथैल्पी कितनी आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 कितना आ गया सर 0 0. तो रिएक्शन को ऐड करना मल्टीप्लाई करना Oh. ये सब बातें हमने थर्मोडायनामिक्स में भी करी थी आज यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Serious. रिएक्शन को उल्टा करते हैं सर रेसिप्रोकल हो जाता है फिर अगर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं Oh. उल्टा किया तो रेसिप्रोकल हो गया उससे मल्टीप्लाई किया पावर 2 हो गया 1 की पावर 2 सर 1 होगा Ow. 10 की पावर 5 Ow, का ow, ow. पावर 2 तो 10 की पावर 10 हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर माइनस 10 होगा कि इक्विलिब्रियम 10 की पावर 7 डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं तो बस यही छोटा कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड है रिप्रेजेंट पे एंड One by 64 raised to 1 by 10. One more word 64, that's 1 by 8. सर 1 बाई अंडर रूट If I 1 get बाई C, D, 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 then बाई 8 आएगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम I'm gonna be कांस्टेंट किसके बराबर होगा 1 बाई 8 के बराबर होगा रिएक्शन को उल्टा करना और उल्टा करने के बाद रेसिप्रोकल हो गया और रेसिप्रोकल को फिर किससे डिवाइड कर रहे हो 2 से तो पावर कितना हो गया 1 actually बाई answer 2 is it says it. निकाल यही तो करना था But I cannot show it. But yeah, I can show it to you guys at least. For real, for sure. Back again, yeah, my boy. 1 by 8. 1 by 8. 1 by 8. 1 by 8. अब ये आए सर फिर से हाँ मुझे सर जानते हैं सर थोड़ा सा सर हाँ अब देखो भाई मल्टीप्लाई करना इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर माइनस 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में क्या आएगा 10 की पावर Now guys, 1 minute.
urgent work in 3, 2, 1, 0.
Yo, sorry for the delay. I think we can start it right now. Let me just refresh this, then open my laptop cam, and bam. Okay. Let's just do it. And we got how many subs? 51 or 52? Could be 52. 51. It's fine, it's fine. Okay, it's fine. Display captions. Laptop cap. Okay. And let's just start today. I don't want to waste more time. Finally, I've prayed. Oh, okay. Let's just start. -3 आएगा, यही होगा। तो भाई साहब अब पावर मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको दिक्कत आ रही है, उसका मतलब 11th के अब एंड तक पहुंचने वाले हो तुम भाई, और अब फिर वहीं पर अटक जाओगे जहाँ 9th 10th में थे, दिक्कत हो जाएगी भाई। चल एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये ले भाई, इसका आंसर बता। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए से डी जाना है, सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। ए से डी जाना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा। लिखो मत, चुपचाप पहले अटेम्प्ट करो, लिखने की कोशिश मत करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तुम अटेम्प्ट करके लिखने की कोशिश करो। तुम बस साथ में अटेम्प्ट करके देखो क्या हो रहा है, कैसा आएगा। एडिशन हो रहा है पूरा जल्दी पूरा 2 4 6 2 4 8 8 6 24 माय बॉय। कैसे होगा? ए से डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए से डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जब आप ऐड करते हो, अगर रिएक्शन को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 × 4 × 6। जब रिएक्शन ऐड होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 48 आएगा। बस यही करना है। जब रिएक्शंस को ऐड करते हो तो वो क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर ये आंसर आ जाएगा, 48 आ जाएगा। बस यही ध्यान रखिए। ये देख लो, अब तुम्हारे ऊपर। अब सर क्यों अरे भैया अभी थोड़ी देर पहले ऐड करना सिखाया है। रिएक्शन जब ऐड होता है, रिएक्शन जब ऐड होता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? सर इसका आंसर भी क्या आया? डी आया, 48 आया। सर आंसर क्या आ जाएगा? तो रिएक्शन ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। तो मैंने आपको 3 चीजों पे बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सर रिप्रेजेंट करने का फॉरवर्ड लिख रहे हो या बैकवर्ड लिख रहे हो। दूसरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंज करोगे उस पे इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट डिपेंड करेगा। और तीसरा, सर अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड, रिएक्शन को ऐड किया तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये क्या था? K1 था और ये क्या था? K2। तो ऐसे K1 K2 मल्टीप्लाई हो गया। डन। तो
उसका रीजन बताता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा डिपेंड करता है शायद वंस अपॉन ए टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है माइनस से माइनस, ये माइनस प्लस हो गया। सर देखिएगा ये कितना आ गया माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू एल एन के इक्विलिब्रियम। सर अगर ध्यान से देखो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है देख लो भाई, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है सर देख लो, क्या होगा रिलेशन क्या होगा भाई साहब देखोगे टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है इसका एल एन के इक्विलिब्रियम का डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी आपको भी पता है रिएक्शंस में क्या होती थी, ये गिब्स एनर्जी के साथ रिलेट करके हमने एक इक्वेशन निकाली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा देख लो टेम्परेचर के साथ एलएन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एलएन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी शानदार कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सही, थोड़ा सा अब मतलब भाई जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है कि पुराना चैप्टर भी आपका रिवाइज हो रहा है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा मतलब जिनको दर्द है, जो लोग थोड़ा कभी कभार पढ़ते हैं, जो हर एक चैप्टर फ्रेश स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बेटा आई एम सॉरी। अब ये कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट का साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप देखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन वही होगा जो वहां लिखा है। चलिए मुझे बस इतना बताइए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ध्यान सुनना भाई साहब, टेम्परेचर ज्यादा हुआ मतलब डेल्टा एच नॉट बाई आर टी की वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू कम हो गई। सर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर होता भी किसमें केल्विन में होता है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ये बताओ निगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, बस इतना बता दो सर एल एन के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एल एन के इक्विलिब्रियम क्या होगा। मान लो एक निगेटिव में बता रहा हूँ, निगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, मान लो इसकी वैल्यू पहले 10 थी, ये 10 है, और पहले इसका वैल्यू 6 था, अब इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो सर यहाँ पर देखो सर आपने निगेटिव वाले की वैल्यू कम कर दी तो इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा
एक्सोथर्मिक में निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, अब ये प्लस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सर, डेल्टा एच नॉट बाई आर टी की वैल्यू क्या Positive. होगी सर, कम होगी। लेकिन यहाँ प्लस वाला था भाई, ऐड कर रहा था, अब ऐड करने वाली वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो भी एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी। सर यहाँ पर अगर टेम्परेचर कम करोगे एक्सोथर्मिक में तो भैया डेल्टा एच नॉट बाई आर टी ज्यादा होगा, और जस्ट उसका अपोजिट अब यहाँ पर चल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा, और वो भी एक्सपोनेंशियली। ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक में एंडोथर्मिक का जस्ट अपोजिट लगा देना भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। So for endothermic process, temperature increases, the delta H not RT decreases. Lonnie, that is the given here, right? Should be there. Then the equilibrium constant should be given. If temperature decreases, then you need to know that delta H naught increases, and log K decreases. That K decreases again. Via. Got this. For exothermic reactions. Exothermic reactions. Ln K EQ is equal to delta S naught divided by RT. Sorry, what that is the R minus plus delta H naught by RT, that's given here. So temperature, if temperature increases, then we will say that delta H naught by RT will decrease because it is in, sorry, if this is an endothermic, yep, then we need to know that ln KEQ also decreases since it's an exothermic, my bad, then KEQ will also decrease. But for the temperature decrease, we will have delta H naught by R T as an increasing since it's inversely proportional. Ln KEQ will also become inversely proportional exothermic conditionally, and KEQ is increased. Right, let's go, man. We did it. And this increases and decreases exponentially. 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 Then exponentially. Yeah. My bad. We cannot give up. We can do it. We have to move forward. So temperature increases, log KEQ. Okay.
एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखिए, आंसर निकाल लीजिए। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बताओ भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक का बढ़ता है कम होता है, एक मान ले हो जाएगा सर जल्दी। हाँ भाई साहब एकदम भाई। अब देख रहे सर प्लस और माइनस का गेम बेटा, मैं तुमसे बस इतना ही बोल पाऊंगा कि एक्सोथर्मिक नेगेटिव है और एंडोथर्मिक पॉजिटिव होता है। अब ये भाई थोड़ा सा आगे जाए, RT is basically getting divided by on each every term. So if we see the Gibbs free energy formula, we'll get that delta H naught by RT minus T delta S by RT, that is P gets कंपेयर कर रहा हूँ ई बेस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ये जितना भी मैंने कंपेयर किया उसमें ई बेस है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल बोला मैं, इसीलिए मैंने एक्सपोनेंशियल बोला। अगर बेस 10 होता तो 10 की पावर में बोलता, ठीक है ना, 10 की पावर में बढ़ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने पास, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बातें कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बातें कर रहा हूँ। ध्यान सुनना अपने पास, मैंने तुमसे बोला भैया एलन के इक्विलिब्रियम, ये देख लो एलन के इक्विलिब्रियम डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, ये रिलेशन था टेम्परेचर के साथ, ये रिलेशन था टेम्परेचर के साथ। अब एक इंसान आया बोला सर, हाँ सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट, ये देखो डेल्टा एच नॉट, ये देखो किसने बोला सर टेम्परेचर अगर हम बदल देते हैं एट टेम्परेचर T1, अगर टेम्परेचर हम कितना रखते T1, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना लिखते K1, तो भैया किसी रिएक्शन में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन की बात की जाए, किसी रिएक्शन की बात की जाए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, RT1 लिख दो। सर ये देख ln K1 को ऐसा लिख सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं भाई, टेम्परेचर T1 हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख दिया मैंने K1, टेम्परेचर अलग अलग, याद रखना केल्विन में रखना है टेम्परेचर, कभी जिंदगी में गलती से डिग्री सेल्सियस मत करना, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, टेम्परेचर की जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला बेटा वहां डिग्री सेल्सियस मत पुट करना, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो। ये देख ln K1 की बात कर रहा हूँ, K1 एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला बेटा वहां डिग्री सेल्सियस मत पुट करना, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो। ये देख ln K1 की बात कर रहा हूँ, K1 यहाँ पुट कर डेल्टा एच नॉट, ये रिएक्शन का सर एक बात बताइएगा, अगर टेम्परेचर की वैल्यू मैंने T2 कर दिया, अगर टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो गई K2। सर यहाँ पर ln K2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T2 लिख सकता हूँ। सर देख टेम्परेचर चेंज करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर T1 था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, T2 था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक सीधा सा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। कैसा रिलेशन आपको पता चलेगा। मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को 2 - 1 करना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं 2 - 1 कर दूं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड से सर माइनस कर दूं ln K2 माइनस ln K1, इसको इससे माइनस कर दो डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T2, दिस माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T1। एक बार माइनस करके देख लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, दिस को इसको, सर यही होगा। अगर माइनस करते हो ln K2 माइनस ln K1, अगर ln K2 माइनस ln K1 करते हो तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे ln K2 बाई ln K2 बाई ln A माइनस ln B को क्या लिखा जाता है ln A बाई B। सर ये देखिएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये माइनस है तो दिस विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T2 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, डेल्टा एच नॉट बाई आर T1 हो गया। सर
की वैल्यू देख लो, फाइनली हमारे पास जो टेम्परेचर के साथ अलग अलग रिलेशंस आते हैं उसमें क्या आ जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया इसलिए ताकि मैं ये बता पाऊँ कि अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिलेटेड होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कैसे रिलेटेड होता है। ऑब्वियस है, एक्सपोनेंशियल वाला लॉग हमें आता नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे पास नेचुरल लॉग में देखोगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगर टेम्परेचर अलग अलग है, log K2/K1 की वैल्यू निकाल रहे हो तो फाइनली बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखिएगा, टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फाइनल रिलेशन बता रहा हूं। टेम्परेचर के साथ न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। जब भी कोई न्यूमेरिकल देगा फॉर न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूला आप डिराइव करके यूज कर लेंगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, log K2/K1 2.303, ये क्या किया मैंने, यहाँ लाके डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला Can you put the extended format? तीन फॉर्मूले, एक, दो और तीसरा, Can we? ये तीन फॉर्मूले For T1 and T2. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये तीन फॉर्मूलों का ध्यान रखना, ये तीन फॉर्मूलों का ध्यान रखना भाई साहब। जल्दी जल्दी छापिए, जल्दी छापो फटाफट। Huh? क्या होगा, Maya? One minute. I'm attending the lecture. It's gonna finish now. I'm not sure till when. Yo, chill. What's going on? I just. Okay, never mind. Let's go back. Let's. Oh yeah. Let me mute. Okay. So K1 K2/K1 is equal to delta H naught 2.303 R into 1/T1 डन। minus 1/T2. Yep, sir. क्या होगा, श्योर? तो बस ध्यान रखिएगा Formula. सर, ये ध्यान रखिएगा अपने पास कि भाई साहब My टेम्परेचर के bird. साथ कैसे रिलेशन होता है, एक्सोथर्मिक में कैसे फ्लक्चुएशन होती है, एंडोथर्मिक में कैसे फ्लक्चुएशन होती है, इनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। दूसरी बात, टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर चेंज करेगा तो बेटा ये वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकाल लेना। तो चार फैक्टर्स पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, याद रखना। चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक तो लिखने का तरीका फॉरवर्ड बैकवर्ड, दूसरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तीसरा सर स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, मल्टी स्टेप। अगर रिएक्शन ऐड करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई। और अगर रिएक्शंस को मतलब ऐड कर दो इक्विलिब्रियम, एंड द लास्ट वन फोर्थ फैक्टर जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। इन चारों के अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। हाँ बेटा बॉटनी क्लास है बेटा, कर लो ना, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है यार। क्या अजीब से लोग आए थे यार, चलो
क्लास कर लेना, 8 बजे क्लास है तो भाई रिकॉर्डेड क्लास है शायद, जहाँ तक मुझे दिख रहा है लोग बता भी रहे हैं, और रिकॉर्डेड ही होगी, लाइव होती तो मुझे कॉल आता, ठीक है। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बता, इन चारों फैक्टर्स के अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे अपने पास कोई भी हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे अपने पास क्या हो रहा हो कि सर टेम्परेचर मल्टी स्टेप रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है सर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड मोड ऑफ रिपल। इसके अलावा कुछ भी चेंज कर लो, ध्यान रखना अपने पास, नोट करके पॉइंट ऐड कर लो भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे फर्क नहीं पड़ता भैया, आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद को एडजस्ट कर लेगा। सर वो चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और कैटलिस्ट, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। इन 4-5 लोगों से फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसंट्रेशन डबल भी कर दिया, अगर तुमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का डबल किया, कोई बोले सर कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, ये देखो, अगर कंसंट्रेशन तुमने डबल किया, मान लो रिएक्टेंट का डबल किया बेटा, तो आप इसको डबल करोगे तो रिएक्शन में आपको ही पता है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अगर कंसंट्रेशन डबल करोगे, ये भी डबल हो गया सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रेशर डबल करोगे, ऑब्वियस है रिएक्टेंट का डबल करोगे, प्रोडक्ट खुद ही डबल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, वॉल्यूम का क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रेशर डबल करोगे, ऑब्वियस है रिएक्टेंट का डबल करोगे, प्रोडक्ट खुद ही डबल हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, कैटलिस्ट का और इनर्ट मटेरियल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई साहब कंसंट्रेशन क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, कैटलिस्ट क्या है, इनर्ट मटेरियल्स क्या है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ 4 लोगों पे डिपेंड करता है, इन लोगों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस लोगों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ध्यान रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा जल्दी छाप दो, 3-4 पॉइंट है, जल्दी छापो। क्या होगा, कंसंट्रेशन, हो जाएगा, यस सर, डन। यस सर, यस अच्छा, सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक दो चीजें और क्या जाननी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये देख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। कल से हम यही कर रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े, उनके बीच का रिलेशन पढ़ा। आज क्या पढ़ रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब भैया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेटा यूनिट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेटा यूनिट क्या होता है, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ये कैसे बताएं, इस तरह से आएगा, ध्यान सुनना। अगर मैं बात करूं, रिएक्शन वही दे देता हूं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो पहचान रहे होंगे ना। Today is Wednesday, right? Okay, wait. So, Wednesday, Thursday, then we have Friday, Saturday. So 4 days. That's crazy. Okay, that's great. That's great. W. So I'm gonna count this day as the 3rd lecture. Then the 4th lecture will be done tomorrow. 5th lecture day after tomorrow. That is today's what's the day today, by the way, again? Just to notify myself. It is October 15th. October 15th is the day. Yes, my guys, my dear guys, my beautiful people. Yes, it is. You do not have to wait for your own moment. Let the moment rain and shine. Yep, yep, yep. Do not give up. Okay, let's do it. भाई कल से ये रिएक्शन अब आपकी जिंदगी का पार्ट हो चुका है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिएक्शन आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ध्यान से देखना अपने पास। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान सुनना,
अगर यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है, छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे इतना बताओ कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? और मोलर. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? मोल्स पर कैपिटल लीटर. M moles per liter, molar और M capital M यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर Pascal प्रेशर का और ATM हो सकता है, बार हो सकता है, mm of x mm. Okay, bar, yeah. पास्कल हो Hg, सकता oh है, yeah. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, अलग अलग. Derived units. यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है? No unit. सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है. No unit, unitless, because it does not have any आप इन सारे unit. यूनिट्स को जानते हैं? Baya. यूनिट्स पास्कल्स, ये सब चीजें प्रेशर का यूनिट है, तो ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है. तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Concentration. वो निकालने से पहले कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर लीटर. Okay. एटीएम बार कुछ भी हो सकता है, पास्कल न्यूटन पर Mole मीटर per मोल liter. फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है. अगर k इकाई का मोल बताओगे, सर k इकाई का यूनिट क्या होगा? सर मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर कोई ATM. यूनिट बोल रहा है, इसकी पावर a, इसकी पावर Bar. k इकाई का यूनिट क्या दिख रहा है? ये मोल यूनिट mm of Hg. क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? Pascal, that is PA. यूनिट ऑफ k इकाई क्या होगा? Newton per meter square. यूनिट ऑफ k इकाई क्या हो जाएगा? Unitless. कोई यूनिट होता नहीं. तो मोल फ्रैक्शन की पावर c, मोल फ्रैक्शन की पावर d, कोई लॉजिक नहीं है. मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस का पावर कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? यूनिटलेस का पावर कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? सर यूनिटलेस का पावर कुछ भी कर लो, खत्म. ये देख, अगर तुमसे बोलता हूँ, ये देखना, K काय. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक केसी वो वाला केसी मत सोचना. की पावर d, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर, वाह यार, कॉन्सेंट्रेशन क्या ऑफ सोचने लग गए. इसमें क्या होगा? सर ये मोल्स पर लीटर पावर c, मोल्स पर लीटर पावर d, मोल्स पर लीटर पावर a, मोल्स पर लीटर पावर b. ऊपर क्या हो गया? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट. नीचे क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा. यूनिट ऑफ केसी किसके बराबर होगा? तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर. सर इसी को हम लोग कल से क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एन या डेल्टा एन जी बोलते. यही था ना शायद. क्यों? अरे भैया डेल्टा एन जी क्या होता था? वेयर, अब ये चीज तो आपको ही पता है. डेल्टा एन जी क्या होगा? सर सी प्लस डी के मोल्स माइनस ए प्लस बी. प्रोडक्ट के मोल्स माइनस क्या हो गया? ये किसके मोल्स हो गए? रिएक्टेंट के. तो डेल्टा एन जी तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स से अब आ रहा है. यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर क्या हो जाएगी? डेल्टा एन. उसकी पावर क्या हो जाएगी? डेल्टा एन जी. तो ये ध्यान रखिए. ये देख सर, ये कितना हो गया? इस मोल्स पर लीटर की पावर कितनी हो गई? c प्लस डी. नीचे क्या हो गया? a प्लस बी. तो c प्लस डी माइनस a प्लस बी को क्या लिख देते हैं? डेल्टा एन जी लिख देते हैं. डेल्टा एन जी लिख देते हैं, हो जाएगा. तो यूनिट ऑफ केसी क्या है? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर कितना? डेल्टा एन जी. कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर लीटर, पावर कितना हो गया? सर डेल्टा एन जी. सिमिलरली अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखूं, तो प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर. यूनिट ऑफ केपी अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसके बराबर है? प्रेशर की पावर सी, प्रेशर की पावर डी, प्रेशर की पावर. Oh my mouse. यूनिट ऑफ प्रेशर जो भी दिया है, उसकी पावर फिर से डेल्टा. What's the charge? यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. बस यही है. केसी केपी के का, बस ये याद रखिएगा. केसी केपी के का, ये तीन टाइप की रिएक्शन, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी केपी के का ध्यान रखिएगा. भाई साहब के का केसी. Yes sir. Wait a minute. So, we're gonna check this out first of all. Okay.
No, this is me. No, I cannot show my hair. Oh yeah, that is good. Oh yeah. Let's just do it. Don't feel anything sus about me, bro. Just don't. I'm just doing this for fun. Yo, what's going on? Okay, okay. 24-hour stream one day. You gotta call that up. You gotta say that up. Huh? Let me check that out. My boy getting it up. Cut off my boy. Let's go, yo. We gotta make that possible. Gotta make that possible. Is it okay if I attend it like this the whole time? This looks very, very weird. My sister and my mother just found me watching like this. Dang, that's crazy. I have to do this hideously so that no one notices. I'm not gonna say anything so that I get copyrighted. Yep. Anything that is coming in my mind is just based on copyright. So yep. Anything that is going through my mind, I just can't share it. I'm so sorry. Okay. I know this looks very weird. Product. Reactants. Oh. Product reactants. We got KB. Pressure of C, pressure of D, divided by pressure of A, small a, pressure of B, small b. Yeah, this is me, my guy. I am Totality IO, of course. Remember my username? Yeah, you can see username. Username. Yep. You got it. Yep, you got it. Yes. You got it. My voice is broken. KP is equal to unit of pressure raised to the power of delta NG. Raised to the power of delta NG. Yeah. That is good, my guy. Oh my god, boy. If there's anyone watching me, then that's crazy, my boy. It's still 29 and I like it. I like it. I don't know, there's a random person that popped out of nowhere. 5 or wait, what? Oh. That looks very weird. Wait a minute. Can I check my voice? Wait a minute. Yo. It looks so shrill. Let me put it in here. Let me go afterwards. Put the sound so high. This looks very, very weird. That looks crazy.
That looks so crazy, bro. What? No, I'm just. Am I just smiling so badly? Oh my god, that's crazy. Ha ha ha. Just fun me watching like this. Damn, that's crazy. And to do this hideously, so that no one notices. I'm not sure whether my voice is so crazy or not. If I sing it, I'm gonna get copyrighted. Plus, I can't even sing, my boy. Or curl. Yeah. Don't call me GFI. No! There's someone watching me now. Wait a minute. Let me go through it. No! This is crazy. Nah, that looks so irritating. I don't like this voice being so shrilled. Let me mute myself. Oh, damn. Way, हो bro. जाए तो ये ध्यान रखना सर अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से आप यूनिट निकाल सकते हो मूल फ्रैक्शन में तो टेंशन ही नहीं लेना है कंसंट्रेशन वाले में भैया C प्लस डी माइनस A प्लस बी उसको डेल्टा NG बोल दो यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा NG प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स श्योर छाप दिया यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लो भाई हो जाए अरे डेल्टा एनजी इसलिए लगा दिया भाई गैसियस मोल्स होगा तो भी उसके अंदर याद करो कॉन्सेंट्रेशन बेटा दोनों जगह था ना कॉन्सेंट्रेशन गैस के लिए भी आता था लिक्विड के लिए भी आता था तो डेल्टा एनजी लगा दिया क्या ही फर्क पड़ रहा है डेल्टा एन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर डेल्टा एनजी गैस के लिए लगाते थे लेकिन एक बात बताओ कॉन्सेंट्रेशन तो गैस के लिए भी था लिक्विड्स के लिए भी था ना कल ही लिखवाया एक्टिव मास गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है लिक्विड के लिए हो सकता है तो भैया दोनों के लिए लिख सकते हैं ये देखना अपने पास कोई रिएक्शन दी है अगर मुझसे कोई रिएक्शन दिया जा रहा है Let's do it. Let me just do the formula. Oh, I know this formula. I know this equation. Oh मुझे yeah. बताओगे ECW. यूनिट ऑफ ECl5. अगर मैं केसी लिख रहा हूं तो मुझे बस इतना बता दो मोल्स पर लीटर की पावर कितनी होगी और अगर यूनिट ऑफ केपी लिख रहा हूं तो भैया ये बता दो भैया एटीएम की पावर कितनी होगी पावर बस बता दो यहाँ पर Power, क्या power, होगा? power, सर, power. यहाँ पर मजा क्या आएगा. होगा? Power, यहाँ पर power, क्या power, होगा? इन power, दोनों का power, केस में power, क्या power. होगा? मजा आया. Power, 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 power. मजा आया. Power, 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 power. चलो 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 पावर पावर डेल्टा एन जी निकालो ए प्लस बी मतलब 5 नहीं बना रहा है -2 दैट इज -1 दैट इज इतना जा रहा है तो 1/1 क्या बता सकते हैं सर इस केस में कितना होगा उस मोल केस पर में कितना लीटर होगा बता पाओ होल रेज टू होल -1 कितना होगा लीटर सर पर यहाँ मोल पर पावर कितना हो जाएगा लीटर सर पर यहाँ मोल हो पर रहा है पावर भैया -1 तो मतलब क्या हो गया मोल इनवर्स हो गया और लीटर +1 हो गया पावर -1 कर यहाँ पर भी एटीएम की पावर -1 यहाँ पर देखोगे तो भैया क्या अच्छा, हो जाएगा मोल्स ओके। पर लीटर की पावर -2 मतलब मोल की पावर No way. -2 लीटर की पावर No. Chill, bro. No. That is crazy, bro. That's crazy. Minus. Yeah. The okay, this is kind of blocking my view. Oh, nah, bro. N2 plus 3H2. Yes, yes.
gaseous gives this one. So 2NH3 gas gaseous. Unit of this thing is equal to mole liter minus 1 minus 2 mole minus 2. That's how we make ourselves a better place. पावर प्लस 2 Yep. यहाँ पर क्या हो जाएगा एटीएम की पावर We just माइनस need to 2 use this एटीएम की for पावर माइनस 2 minus 2 plus 2. एटीएम की पावर माइनस 2 Then अच्छा why एक बात did we get बताना this as minus 2? That's the thing. Why? Like, what is going on? So, because we took the react products as इस first केस and में then क्या so होगा that's minus सर 2. यूनिट ऑफ So delta केसी NG यूनिट squared. ऑफ केपी क्या होगा Unit of KP यूनिट ऑफ केसी यूनिट ऑफ केपी 0. क्या होगा That इस is केस 1. No, unitless, I guess. I will say में? इस केस unitless. में क्या होगा यूनिट ऑफ Unitless. केसी यूनिट ऑफ केपी इस केस में क्या होने वाला है Unitless. सर Unitless. देख क्या आएगा? Unitless. If I get it wrong, कितना आ जाएगा I will केसी beat और myself केपी का with क्या punch. रिलेशन आएगा यहाँ पर there. Okay, सर he's यहाँ gonna पर threaten me. देखोगे डेल्टा एनजी कितना है जीरो डेल्टा एनजी जब जीरो है इस रिएक्शन में Bro, be real, इस okay, रिएक्शन okay. में डेल्टा Let's एनजी see. जीरो है तो ये किसी की पावर ले लो यूनिटलेस आ जाएगा Let's go, bro. अगर Keep आपकी that पावर hand आपकी क्या down. हो गई I सर got- याद I करो got जहाँ correct. डेल्टा एनजी इक्वल होता था जीरो होता था let's वहाँ go. के सी के पी और के का I'm ये just सब joking, guys. बराबर I'm not होते like थे this. तो भैया ये यूनिटलेस है तो ये भी यूनिटलेस ये भी यूनिटलेस सारे के सारे यूनिटलेस हो जाएंगे क्योंकि डेल्टा एनजी जहाँ जीरो है No, वहाँ तीनों please बराबर just होते don't थे call कल ही me. की I'm क्लास में just बताया playing it for था fun. डेल्टा एनजी जहाँ जीरो होते थे वहाँ Please, तीनों I'm so बराबर sorry, होंगे bro. तो केसी के पी के का ही तीनों क्या हो जाएंगे Please. अपने पास बराबर Done? Just don't call me हो like जाएगा this. ध्यान रखिएगा Oh my god. पक्का That, नहीं, that's कहीं भी आपसे crazy, बोला जाए ना जैसे bro. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है That एक is सिंपल crazy, सा बता bro. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का Oh my यूनिट God, देखिए आप that's इक्विलिब्रियम messed कांस्टेंट up. के बारे में जानते हो कि एट इक्विलिब्रियम सब कुछ सारे के सारे That ऑल is मेजरेबल messed प्रॉपर्टीज up. बिकम्स कांस्टेंट तो भैया सारी की प्रॉपर्टीज अगर कांस्टेंट हो जाती है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज अगर कांस्टेंट होती है तो बेटा इसका मतलब क्या होता है सुनना अपने पास ये सुनना अब यूनिट्स देख लिया तो भाई साहब एक छोटी सी चीज एप्लीकेशन passo dentro. इक्विलिब्रियम Let's go, guys. 9 minutes left, and we're gonna start. What? First, we'll revise this, then we'll go through terminal. First of all, should I make a poll? I mean, nobody's gonna answer this for real. As it shows 0 compared to this. Oh man, this kinda looks so really bad. Should I remove this? Yep, I'm removing it. My father's coming. I'll get doomed if he knows this. Yeah, now it's great. Mole per liter. Raised to the power of minus 2 mole minus 2 L square. Yep. Read the classic, my guy. You will get it. You will get it. What is the unit of Kc? You will get it. Unitless. Oh my god, that's very bad. Unit of Kp. That is unitless. Like, what is next? Oh, here you want me to wear this? Okay, here we go. Here we go. Rayon. How many of these does it take me to complete? So apparently, I'm not sure how, but somehow, in 3 hours 32 minutes, I get 30 beats. That is actually fine and great. I like it.
It's because of you guys. I really appreciate it. In 3 hours 30 minutes, I get 30 views, and I'm really appreciating it. I'm so thankful for what you have given me, guys. I'll change my symbol today. It looks really weird. Even my banner, I guess, my banner, it's also consisting of it. Okay? Looks really weird. Oh my god. Sheesh, man. This looks really bad. I don't know what to say. Let's just do it. एप्लीकेशंस ऑफ You gotta make this productive. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? भाई साहब सिंपल सोचना, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बता रहा है? हाँ नॉर्मल यार केस में अगर सर, तुमसे बोलो ना पूछा सर, जाए मुझे पता किसी है, रिएक्शन सर। में तो इक्विलिब्रियम नो, नो। कांस्टेंट क्या होता है? नो। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, हाँ सर। यही होता है ना। हाँ। प्रोडक्ट का रेशियो डिवाइड बाय रिएक्टेंट, यही होता है। इक्विलिब्रियम हाँ, कांस्टेंट सर। का फैक्टर्स देख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बातें कर ली। बिल्कुल अब देखो सही ध्यान कहा सुनना, आपने सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता क्या है? सब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं सबसे पहली बात सर स्टेबिलिटी बताता कैसे है, होगी इसका सर? स्टेबिलिटी के बार बारे बार में। आ रहे हो इसका जा रहे हो, आ रहे हो reactants जा and रहे हो। products। मुझे एक बात बोल देना स्टेबिलिटी ऑफ कि मैं एक पंच खाऊं। reactants and ये बोलता है हाँ सबसे मैं खा पहली लिया। चीज जो बता रहा होता है कौन ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये देखना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, ध्यान सुनना अपने पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा ज्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ये सुनना अपने पास। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बेटा ज्यादा है, दैट मींस व्हाट? सर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लो ऐसे लिख देता हूं, ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1000 है, सर इसका मतलब क्या होगा? ये देखो, इसका मीनिंग क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1000 है, इसका मीनिंग क्या होगा? कि सर प्रोडक्ट कितना है, रेशियोज देख लो, प्रोडक्ट कितना है 1000, रिएक्टेंट कितना है 1। मतलब सोच रहा है तेरा सैचुरेशन कब आया है? जब प्रोडक्ट 1000 बन चुका है, रिएक्टेंट कितना है 1। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब सर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? सर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू। मतलब अच्छा एक बात और बताओ, प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बन रहा है भाई? अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट ज्यादा क्यों होगा? वो इनडायरेक्ट वे में यही तो बता रहा है कि प्रोडक्ट ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ऑब्वियस है, रिएक्शन कब सैचुरेट कर रहा है? जैसे प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। जैसे अपनी क्लास में देखोगे भैया, कुछ लोगों का सैचुरेशन लेट आता है, क्योंकि पता है कि ये क्लास का जो प्रोडक्ट बनेगा 1.5 साल बाद, जो धीरे धीरे क्लासेस चल रही सबका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा एज कंपेयर टू अभी का 10-15 मिनट। ठीक है, तो ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका सैचुरेशन लास्ट में क्यों आता है? बहुत सारे लिस्ट लास्ट में क्यों आता है? बिकॉज उनको पता है प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। याद रखना, अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होना मतलब ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल, रिएक्टेंट कम स्टेबल। ठीक है, और इसका अपोजिट देख लो, अगर मैं वैसे बोल देता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है तो भैया इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एकदम अपोजिट चले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है, दैट मींस व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू सर अब कम आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होगा। सर यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी प्रोडक्ट
स्टेबिलिटी चेक करनी है, अगर है किसी भी रिएक्शन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से देख के बता सकते हो कि भैया प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा याद रखना, अगर ज्यादा हाई है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है मतलब उस केस में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। अगर हम रिलेटिवली देखेंगे तो उस तरह से कंपेयर करें, रिलेटिवली देखेंगे तो उस तरह से कंपेयर करें। जैसे देख ए बी है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 ए टू बी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख ए टू बी है, ये बताओ इन दोनों में से प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनाना चाहता है, कौन ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, इन दोनों में से कंपेयर करो। ध्यान सुनना, ये दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से प्रोडक्ट कौन ज्यादा बना रहा है, प्रोडक्ट कौन ज्यादा बना रहा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। किस केस में ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है इसकी, सर इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट। अगर मैं तुमसे पूछ लूं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट, कौन रिएक्टेंट कम टूटेगा, कौन रिएक्टेंट कम टूटेगा, बता सकते हो कौन सा रिएक्टेंट कम स्टेबल हो, सॉरी कम स्टेबल होगा। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कैसे बताओ, सर ये जल्दी टूट रहा है मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम, क्योंकि देखो ना इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो भैया अगर मैं तुमसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ए टू बी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बतानी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी, प्रोडक्ट को ए बी की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो Yes. प्रोडक्ट में उतना नहीं जा रहा जितना ये जा रहा है, ए बी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए, क्यों, अरे भैया ये जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बना रहा है, देखो ना इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इतनी ज्यादा, मतलब ये फटाफट किधर टूट रहा है, इधर की तरफ, जो टूट रहा है वो स्टेबल थोड़ी ना है, जो टूटता है उसको स्टेबल बोलते हैं भाई साहब, बॉन्डिंग की बैंड बजा, जो टूट रहा है बेटा ये जल्दी टूट रहा है, शायद दिख रहा हो इसके डिसोसिएशन की टेंडेंसी, डिसोसिएशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ए टू बी, डिसोसिएशन टेंडेंसी Sorry. किसकी ज्यादा है भाई साहब, कौन ज्यादा जल्दी A to B. डिसोसिएट हो रहा है, ए टू बी डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ए टू बी जल्दी डिसोसिएट हो रहा है, सर ए टू बी ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है, देख रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ज्यादा है, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल माय बैड, एज कंपेयर, तो यहाँ पर तुम्हें जब Let's भी बोला go. जाए याद रखना, अगर तुम ये देखो, I can open अगर my स्टेबिलिटी ऑफ can, रिएक्टेंट yeah, देख रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ Ira, रिएक्टेंट देख रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हो, तो भैया उस केस में हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और स्टेबिलिटी and stability of reactants can be seen in those the constant equilibrium constant where it is low, and stability of products can be seen when a constant equilibrium is just high or more. Is that correct? I mean, this should be correct. प्रोडक्ट देख रहे हो, ध्यान से देख लेना, Hmm. अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख रहे हो तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं जब, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, सर वहां बैंड पर बजाना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना ये चाहिए, बात ना है, मत बहुत but ये बात दिमाग में बिठा लेना what भाई am I साहब, saying, अगली boy? क्लास में बहुत I ज्यादा just don't यूज होगा। understand, my सर, boy. पहला Yeah, let's एप्लीकेशन go मैंने now. आपको We gotta बता leak, दिया है, अगली leak it क्लास out. में दूसरा Leak it out, और leak it तीसरा out, leak it out, leak it एप्लीकेशन out. आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, KEQ. तो बस ये ध्यान रखिए। बाकी चलिए भाई साहब, जबरदस्त पढ़ाई करने का मतलब 4 मिनट एक्स्ट्रा हुए, ऐसे लोग हैं यार, बट हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाई करा, मज़ा आ गया सर, बहुत दमादम की पढ़ाई हुई. बाकी चलिए भाई साहब, जबरदस्त पढ़ाई करने का You had learned a lot 4 of मिनट things, my एक्स्ट्रा हुए, boys. You ऐसे just लोग हैं made यार, a lot of बट not progress. बाय बाय बाय। That is a lot of progress right there, my boy. Oh, sir just left like super fast. Oh, holy, my boy, my boys. That is super boys, my boys. That is super boys. Oh, did that end? And 3,
seconds, and we need to understand those. So in order to understand it, we need to have the idea. To have the idea, man. Bam. Completed. So technically, I will study this equilibrium factors affecting equilibrium constant today, so that I will so that I can get every part of the idea. And yes, this is not gonna be easy at all because it requires a lot of practice, and practice. And you of course know it because you're a kind of person that are capable of doing it. So yes, of course you shouldn't be doing this. Why should you waste your time based on this, huh? Oh my god. I think I missed a bit of part. Let me use the notes. My notes. Let me use the attachment sheet so that I can like complete that out. May I? Yes, you can. Because we need that for better results. Much better results. Oh, yep. Oh, what is this? What am I doing? So it's 6:30 currently. We have done 1 hour more past of that. Now, currently, I'm thinking of studying chapters from the textbook, completing them, and finally learning thermodynamics. If there are some viewers, I can ask them the question, like the poll. I can give you a poll so that you can understand what's going on and what can make sure about this possibility. So we need to understand and have more facts about this. So this is going to be much crazier, much better. Oh, what is this? What is going on here? Passkeys, get that off here. And I think I will take a bit of break because I don't know. I was gonna just that was a close timing right there. I was gonna sleep out. That was so close. Oh my god. That was super close. Stability order. Oh yeah, before that I might have to even learn this first of all, so I cannot skip this. Haha, get pranked. What are you talking about? Why you want me to get pranked, my boy? That is not actually a way to treat others. Very bad. I really hated that. Shouldn't be doing this. Yep, I shouldn't be doing that. I don't deserve that actually. That's true. AB is greater or no sorry lesser than A2B. That's what it should be. Stability of reactants. Oh yeah. Man, that's crazy by the way. The whole time I've been learning equilibrium. Oh, that's crazy. But I don't want to give up right now. We gotta do this as fast as possible because next thing is that we're gonna do is thermodynamics. See, there is a chance actually that I might have to study See, I'll just explain short, okay? I'm not sure whether my parents will allow me to like stay overnight, or I'm not sure whether I could stay for the whole night because I do not sleep at all. Not only that, it's not based on that actually. It's not like only mentioned about we have to like do this and that. But if I get some time during the night time, like till 2 a.m. or 3 a.m., I might complete structure of atom too. Yes, not gonna lie, I can complete structure of atom. I might have the guts too. Then I can fully complete my chemistry and I can fully focus on mathematics, because in mathematics I have to do some extra questions like trigonometric functions, relations and functions, then sets is easy. I mean, of course I'm gonna do each and every. Then sequences is series again, permutations and combination, binomial theorem. Why am I doing all these questions? Because I really want to practice a lot of math so that I can improve and master all of these. And yep, that's the thing. I should not waste my time.
After that, I will officially start doing biology, because biology is one of the main things I gotta start off with. Biology, biology, biology. Yep, it's very important to have this thing. Basically, if you don't know, we have completed the overall 10 chapters of bio. Yes, 10 chapters. And I think I'm also thinking of currently learning a new chapter of bio while I study physics, rotational motion. So, in order to go slowly with the rotational motion part, I thought of why not first of all, go through the whole bio, then do all that stuff, because I want to first of all go through the whole thing, whole revision thing, because we actually completed 50% of our syllabus. Not gonna lie, we actually did that. Maths, I think we have 14 chapters, and we overall completed 7 chapters. Physics, the same story. Chemistry, there are 9 chapters. I think the thermodynamics should be the fifth one, according to me. And we are gonna complete the fifth chapter too. That's crazy. So, 6th chapter, 7th chapter, 8th, and 9th. Meaning that 6th is redox, 7th is equilibrium, 8th is organic chemistry, the basic principles and techniques, and 9th is hydrocarbons. So these are the topics for the chemistry, I remember. Biology, yeah, biology is gonna be a bit of hectic, because there are 9 chapters. Yep, 9 chapters remaining. So I'm not sure I'm gonna complete that. If I do this under the 1 month, I will be able to complete my whole half goal. Not gonna lie, I can do it. My half of the goal will be finished through this challenge. So 2 month syllabus completion challenge, I can complete with 50% syllabus right here. Yep, and that's a really good strategy right there. But then I have to plan too. Like, I have to get the idea. So for the rest of the 7 chapters and these stuff, I have to do it as fast as possible, because we don't have enough time. We have to move on fast and forward. We need to have some acting upon it, because the main problem is that on November we actually have practicals examination. Yes, it's a different timing actually, if you don't know. The thing is that in India you say that the exams start at somewhere around September or October, but for us this time our exams are starting in December. Yes, actually that's crazy. That is crazy. So our practical exams will be on November, and we have to be really prepared for that. So I feel like it should be important for me to complete physics, chemistry, maths, bio, English as a half thingy, so that I can like go through it. Physics practical, chemistry practical, and bio practicals. We didn't complete it half, because I'm wholly depending upon the school, because they are the ones who will be giving us all the experiments to practice with. And yes, the lab is only available with them. It does not mean that I shouldn't be studying. I will be studying, but I cannot cover the new topics unless the school teaches me to do that. So I'm depending upon the school. Okay, so practical condition is dependent upon the school. It may be after this challenge too. So this does not mean that I can complete my practical syllabus. Talking about English is gonna be a bit different. I have to be doing that consistently, actually, not gonna lie. um, and that's how I'm gonna like complete the whole stuff. Yep. So that's my planning right there. I just feel like I have to write down that planning. Oh, this is gonna be a whole lot of difficulty right there. Super difficulty. Not gonna lie, it's gonna be difficult. It's not at all easy for me to actually complete. It's gonna take a lot of stress out of my mind if I actually complete it. And let me just write this down under somewhere, because I have to schedule this up. I have to somehow like get the idea. So I'm gonna write it somewhere around here. So today, if I'm capable of completing this thing today, then let me just see how many days we have. 1, 2. How many days? We have overall 15 days. So I'm thinking about 5 days. Okay, 5 days. Today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, and Monday. Let's add 6. Okay, let's add 6. That's great. Oh, that's much better. Wow, I like it. So 6. Currently, I'll try my best to complete as much as I can from chemistry.
Then maths will be my central part here. On this day, I have to actually, no matter what, I have to complete mathematics a half syllabus on 16th. It does not mean that I have to practice each and every question. I'll just go through some questions which are I'm not capable of solving or are really difficult for solving and for revision purposes. And for derivation, I will only practice some for mathematics, because in trigonometric functions there are a lot of derivations. I have practiced them once. I have to go through them. However, so yep. Then then biology. Yeah, biology will take a lot of time. It's gonna take a lot. So I'm gonna add second and third chapters for this thingy on Friday. Can I? I'm so doubtful on Friday. Wait a minute, guys. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Mathematics assignments will be done. All 7 chapters. 7 chapters will be should be done. Where it includes assignment, and what else. So from and some questions from each chapter. Next level questions should be done, like miscellaneous too, from each chapter. That is great. For chemistry, I have gone through the notebook, so I feel like I'm gonna go with textbook this time for 3 chapters. Textbook reading, I have to do it today. Textbook reading for 3 chapters. This is important, by the way. So thermodynamics and this is really important. And structure of atom could be either done on both sides. So I'm gonna write structure of atom here, middle between. The problem and the thing that scares me is that structure of atom is a really big chapter. I'm so scared based on structure of atom, because this is a really big chapter. It's gonna take a lot of time. It's not because of the complexity. I know I have studied this chapter. It's kind of fun. It's very nice and fun to learn and all that stuff. Yes, it's because many people get scared and feels it's tough because of the quantum mechanical concepts, of course. But then structure of atom is actually very very lengthy. I swear it's super lengthy. I have to like go through the theories, gotta do the numericals and all that stuff. It's gonna cook my brain up. So I don't know. That's the problem. Like I don't know how I'm gonna complete all the stuff inside of chemistry and maths. That's gonna make me so crazy, go crazy. Um, in case I can add this on Sunday and Monday if I get some time for structure of atom. But yep. Then I will start doing chemical equilibrium here itself. Yep, that is a really messed up part. Chemical equilibrium. Man, I feel messed up with this all the time. Okay, however, Friday I cannot, like, I'll just go through some lectures like physics lecture, chemical equilibrium lecture, and revise them all. I could have revised all of them. Physics, I'm gonna do rotational motion. This is gonna be not at all easy, super difficult. 3 chapters, textbook reading. Yeah, I gotta start it right now itself. I know it looks like I'm wasting time, but I don't really want to. Then thermodynamics. Thermodynamics is for sure here. Thermodynamics. Revising all these chapters. I know I can do it. Let's do it. Let's crack the whole stuff. Bio. This is gonna be super difficult. Yes, I know. Bio. Currently we didn't finish the whole chapter for thermodynamics, but I know I have completed like a lot of percent of the thermodynamics chapter, so I'm confident that I can complete a large part of it. And I'm depending upon the school to like complete the whole thing, because they're actually at the edge of completing this chapter. So I'm gonna like revise that. It's at the day of the school when it reopens again. And for this day, bio 1, 2, 3 chapters. Bio lecture 1 hour. Physics, rotational motion,
chemistry, chemical equilibrium. That is the thing, chemical equilibrium. So we did the third one. This is the fourth one, fifth one, and sixth one. Chemical equilibrium. Oh, this is gonna be super difficult. 4, 5, and 6. 6 will be done. No, sorry, wait. Fourth is Animal Kingdom. Wait, we'll leave a space for Animal Kingdom because it's personally one of the chapters that I might have to take a lot of time in. So I'm not gonna add Animal Kingdom. I'm gonna do that separately because it's one of the tough chapters I know in bio for me. I will add 5, 6, and 7. It's based on plants, only on plants, I guess. Is it? No, wait. It's 2 chapters are based on plants and 1 chapter is based on animals. Structural organization of animals. Okay, nice. WW. Then we can put cell chapter, biomolecules, and cell cycle and cell division. They're recently learned chapters. I think I can do this easily here. And here, bio lecture, I'm gonna put 1 hour again. I don't want to pressurize myself, so I'm gonna put 1 hour. And then physics lecture, nice. Then chemistry lecture. Is this Sunday, Monday? Yep, Sunday. Physics lecture, nice. And I think it's fine. So chemical equilibrium, we actually successfully complete this much. So we have to just do this much, and we successfully complete this much. That's crazy. Then bio lecture, we have to revise these two. It's not going to be easy at all. Bio lecture 1 hour, and physics. Oh yeah, this is gonna be so hectic. Wait, let me just check what else can I go for. Lect. This is physics will take a lot of time. Wait a minute. Let me just plan a bit because it's important for me to plan. Bio. How much will plants? What's the chapter I have to learn? I have to learn respiration, I guess. So far I remember. I have to learn respiration. So Oopsies. Respiration. Man, structure of atom might scare me off. That's the thing. Worst part of all, I'm not sure. Like, what? Oh yeah. Plant. Yeah, photosynthesis. Okay, photosynthesis is the first. Then it's respiration. Got him. Okay, got him. Photosynthesis, respiration, plant growth, and development. Nice. You got this idea. Really great idea. Super G. OP ideas. Then Tuesday. Oh yeah, Tuesday I might have to learn some additional stuff. I can add some of these, but then I'm not sure because there may be some time-changing variables, but these are important ones. Last I can do physics, another one that is gravitation, for revision. Gravitation revision. Then this will complete this much. Like, that's crazy. Then the 4th chapter. You might be wondering how I'm gonna do the 4th chapter. So I dedicated bio chapter of the 4th one to be it on for like, I guess 18, so it's gonna be 21, right? So 22nd and 23rd, so I'm giving it on like till Friday or Saturday. I might be able to complete it. So 23rd I will be successfully completing my full bio, full chemistry, and full mathematics. Physics will be the only one I have to like revise the whole stuff and English too. But physics, I have a plan for that too. It's gonna be a little bit difficult. Let me just think about this. I'm just scared of it actually because I'm not scared of physics. I'm just scared about how I'm gonna manage the time because I'm not really good in time management. So we have 5 days left there, and that is 28.
suppose we have 5 days, and I feel like I can complete units and measurements. So we'll dedicate on completing the first chapter itself. Biome, that's first chapter. Second chapter, I will watch the lecture, and start the. I don't know how long is it. Wait a minute. How long is it? How long is it? Wait. That's the main question. I cannot forget it, right? So how long is it? So how long is it? That's a real important question I need to know. That's a really important question I need to know. Oh, what? Wait a minute. Hmm. Oh, you have got gravitation, by the way. I'm ready already for that. So I'm not bothered about it. So it's fine. It's fine. We have gravitation. So we got the gravitation lecture. Wait a minute, guys. It's kind of a really important thing for me to go through this one by one. So yeah. Oh, this is gonna be a bit complex actually. Gotta lock in then. Sheesh. Playlists, posts. The thing is that I need to learn botany. Yep, I came in the section of botany. So is there any playlists I need to have? Check it out. No, wait. One minute, guys. This is very important for me to know. We need to have the idea. Oh, stop that. Oh my god. I don't want some copyrighted music here. This is what I got. Oh. I don't like ads sometimes, You just get so no idea about this. Yeah. Got it. We gotta check that out. We have to get the idea, that's fine. So okay, wait a minute, guys. These are really important for revision, but I need something which is actually useful for me to have the idea. Oh, this is not gonna be easy at all. Huh? Is it? Visit this. Go to the lectures. Yep. Thank you very much. I got that out. I got the idea of how I'm gonna study for organic chemistry too. Physics, I'm gonna see. See, it's not only about watching a lecture. I have to revise the whole thing. It's not gonna be easy at all. Yes, I'm not gonna lie. It's not gonna be easy at all. Revision of chemistry, rev of equilibrium.
equilibrium. Then we got Saturday I will try rev of phi of rotational if I have some time, because rotational is something which I need to learn. Then yep, okay, this much is fine. Wait, when do I start bio then? When am I starting bio? Wait, so it's on today's Wednesday, that's Thursday and Friday. This is just for the lecture. So I will start bio lecture rev. Bio lecture rev. That's how I'm gonna crack the part F. Okay. Got it. So oh yeah, this is gonna be crazy. We are actually gonna crack this out. Oh yeah, this is gonna be crazy, isn't it? Yep, it will be. It's not gonna be easy at all. We're gonna start with something very, very spicy. Okay, I got the idea. For this part too. But I hope this works, because I don't want to fail and all that stuff. I have failed a lot of times. Like literally, if you don't know, I have failed a bunch of times. Yes, I failed a lot. 1 minute, guys. There is important work.
Yo guys, I think I have to close my cam for now. I feel like it will be better, and I will also have to mute my mic. So sadly, yes, I'll just keep. I'm just right here. I'm studying, so let me just cook. Meanwhile, you guys can too.
So technically, if I talk about the factors affecting the constant equilibrium that we have learned today, we have learned four, actually three types here. Mode of representation, that is basically the reaction. Suppose you are having A as your reactant substance and B as the product that is formed after the reaction. So these are, so since it is a reversible reaction, we know that it will have the reaction in the form of forward and backward. So if you try to represent this in the form of a equilibrium constant, you'll get K equilibrium is equal to, suppose A is the reactant, B is the product. So since we put this, we get the K equilibrium is equal to product B divided by reactant A, and that's how we get the answer. But for B, that gets formed from the reaction to form A, is basically getting through the process. We will be applying the same thing here. So equilibrium constant is equal to square brackets A and square brackets B. That is the concentration, based on concentration, by the way. We do the reciprocal stuff here. So we'll have the idea. So K for equation, K constant of forward reaction and into K constant of backward reaction will always give you 1 because it's a reciprocal. So K constant, sort of equilibrium constant of forward reaction is basically the reciprocal of equilibrium constant of backward reaction. And if you talk about stoichiometric coefficients, this is basically a little bit similar to enthalpy change, by the way, for the first property, because if you reverse the reactions, you actually get to notice that the sign of the enthalpy change takes is also varies, meaning that if you have a reaction that has a positive sign in its energy, once you reverse it, it will become negative, and that can also be done vice versa. Similarly, that's what it's going on in constant equilibrium. You basically reciprocaling it, and that's a really great method to identify the constant equilibriums method by connecting it with the similarity of enthalpy change, of course. Now let's talk about stoichiometric coefficient of reactions, shall we? I'll take that as a yes, by the way. So A reacts to form with B. Yeah, nice. But what if I said that it will multiply by 2? Is there anything that's gonna take place? No, but the number of moles are just increased, right? Yeah, technically you can say that. So the constant equilibrium you see is B by A. But since I actually multiplied it by 2, this will get increased exponentially, meaning that it will get squared. So B raised to 2 divided by A raised to 2, meaning that we actually got this as the answer. So yeah, you got the idea what I'm talking about here. So this is the way you can actually get the idea and understanding of the statement, and this is a really great way to make the understanding much better. I will also try practicing a bit here once I actually reach the point where I complete the every part. But for now, I gotta do this as fast as possible because I have no time left. I gotta do this as fast as possible. So yep. Okay. So multiply it with 1 by 5. The constant equilibrium will have its raised to the power of of 1 by 5 actually. So what else to go with? Temperature, of course. How can we forget that? In thermodynamics, we've studied Gibbs free energy, that is represented by delta naught G, and it also has a formula that we studied in equilibrium, that is not in equilibrium, in thermodynamics itself, minus RT ln into equilibrium constant, that is AKEQ. So if I rewrite this, it's gonna be delta G. I'm gonna make a sound with a pen too, so that you will have the confirmation. Okay, can you hear it? Wait a minute. Okay, kind of looks like it have captured something. That's great. Oh, that hurts my nose. Ouch. 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 Ouch.
That hurts really bad. Okay. Hold on. I literally sneezed out of that hurt. It's fine. And we know that delta naught g can be written as delta h minus t delta s. We know this formula from thermodynamics. We apply this, and bam, what do we get? From equation 1 and 2, we equate them. We get delta naught h minus t delta naught s is equal to minus RT ln k, equilibrium constant. If we divide RT by on both the sides, we get delta naught h by RT minus t delta naught s by RT. I can cancel out t on the to form delta s r, and minus RT ln equilibrium constant divided by minus RT. That's also possible. So basically I made this positive and RT gets into this pot. So yep, surprisingly it's greater. It's great, much greater. And yeah, but you might get the ideas, of course. So that's how we can actually think about this. So we got the idea. Yep, we got the idea. It's a really great way to actually explain this and talk about it, get the idea of this statement, and bam. Now wait a minute, let me just wait a minute, let me think about this. So ln equilibrium constant is equal to, ouch, dang, that hurts, that hurted. Okay. So you're saying that basically we have to divide it by minus RT, because we can actually change the signs on both the sides. That's what I've noticed. So let's just do it minus RT here, and we get the idea, right? So let's just do it. TT cut out, and bam, we get positive and minus and all that stuff. So yep, and that's positive ln KEQ. We can actually do something here too. That's crazy. What is crazy here? You know that ln is basically log E, and once we actually take RT, or never mind, wait, we have an idea. Wait 1 minute, let me think of this. Okay, we have actually taken this. If we increase the temperature in the endothermic reaction, we can actually talk about the delta naught h by RT getting decreased. That is a great way. Okay, that's a great way. Can you hear my voice? Yeah, okay, you can. There is no need to worry, because there was just a decrease in the voice, just to check audio. I've got to check that consistently, my boy. Yeah, consistently. Overall, I noticed that we have got overall 30 views. Yeah, 30 views. We have officially overall got 30 views, and I'm appreciating that. I'm really happy that I got 30 views. I'm very grateful for that, actually, not gonna lie. So I don't need to worry based on that. Stream held. It says it's excellent connection, so it's fine. So I think everything's going fine. See, the only thing I have noticed is that I have to increase my video quality. See, my microphone works very well. Thanks to God, because my audio quality looks fine. I actually hear it usually from my phone, and I get the idea that it's working great. Yep. But then my video quality, it kind of looks not that great actually. You can look at it. Even though I know that it's better to be resourceful rather than just being a person who needs to have more resources, it's actually important for us to develop at the same time, because we need to actually develop slowly. Even though I know I'm kind of person that looks like I'm demanding more, but it's important so that viewers can enjoy the content very well. That's the main thing I'm expecting actually.
Should I like show my laptop cam? Yep, I was just doing it off cam. My bad. In fact, I study off cam even though when there is no live going on. That's crazy. So for endothermic reactions, temperature increases, delta H naught by RT. Okay, you know what? I'm just gonna do this with laptop cam off. Delta naught H by RT decrease. Ln equilibrium constant is increased, and then exponentially we can say that this thing is increased too. Interesting. For endothermic though, for endothermic, delta H by RT. I get it. Why? Because temperature is basically the denominator. If you just check that out, and since the temperature increasing, it's actually going down because I can see that the temperature is at the denominator. You'll get the idea. And temperature, if it is decreased, then delta H naught is increased, and yes, this is actually followed a bit differently. But if we talk about the exothermic reactions, energy is released and log K equilibrium constant is actually decreased, therefore making the exponentially decreasing of equilibrium constant. That's what is taking place. I mean, yep, it's fine. I got that idea, and boy. But still, this does not end right there because this thing is still continuing on to form the more bigger formula. Yup, you're actually right. You're gonna make a bigger one. So since we got the idea of what's the next, we gotta check the other one too. So let's just see what we are gonna go through here. Ln k2 minus ln k1 is equal to delta naught s by r minus delta naught h by rt2, and we gotta check this out, and then we'll get this with the change in, meaning that we got the slight changes here. We have the idea of what's going on, and yes, therefore we actually cancel out delta naught s by r and biome. Nice, that's a great way. So that's great thing to know. Since delta k2 minus delta k1, ln k2 minus ln k1 can be written as ln k2 by k1 too. That's a way of learning that too. That's a great way. Does not mean that all the time you should have this method of way too. It could be in a different method. So yeah, and ln k2 by k1 is equal to delta H naught by r into 1 by t1 minus 1 by t2, 2.303 into log, that is converting this ln into log, and k2 by k1 is equal to delta H naught by r into 1 by t1 minus 1 by t2 is equal to log of k2 by k1 is equal to delta H naught and by 2.303 by r into 1 by t1 minus 1 by t2. That is a very big formula right there, using the big one right there. Concentration of reactants and units of equilibrium constant. We have learned that if the unit is it basically depends upon more on the power of the delta power, that is the delta Ng, or the change in number of moles of the gaseous states. So based on that, we are going to get the idea. If it is number of moles of gaseous state is positive, then we can actually write the unit based on what the quantity is. Like if it is it's based on concentration, then it will be written as moles per liter, as that is the molarity formula. And since we got the delta Ng value, we'll write the raised to the power of delta Ng. Suppose I got it as -1, so it will be moles per liter minus 1 raised to -1. Okay, so you'll write mole raised to -1 per liter, that is raised to 1. That's how you're gonna write it actually. ATM will be raised to -1, and that will give you ATM raised to -1. For unit of Kc, that's gonna be again mole per liter, so it's gonna be mole into L raised to -1. And if you want, you can actually do this in some other conditions too. Suppose you're actually multiplying, or sorry, you got it -2, so delta Ng could be -2, and that's how you'll obtain. So mole of -2 into L plus 2. That's how it sometimes varies, so you have to get some idea sometimes. That's how it
that's how it can be more confusing sometimes. At certain times it will make you more and more confusing, more baffled, and more stressed out. Like, how is that even possible? Like, how did you even get that out? So you gotta, like, check this and get the ideas first of all. So then application of equilibrium constant, we have seen this. If the stability of the reactants is more than the product, stability of reactants is more than the product, then we can say that the concentration, sorry, stability of products is more than reactants, then the concentration of product is actually greater than concentration of reactants, meaning that you have to get a lot of energy in order to make it unstable. So it's products have more stability. But if we talk about decreasing, and also the equilibrium constant is increased, since we are actually not we are trying to make the concentration much constant here. We don't want to, like, make a difference here by applying a lot of energy. But since we apply very less energy when the concentration of products is very low than concentration of reactants, this makes it much unstable, meaning that reactants is more stable than the product, but equilibrium of constant will be a little bit decreased here, meaning that's how you'll actually get the idea. Imagine there is a compound AB. You try to you gotta, like, try to split it. It's an ionic compound, suppose. So it will split into A plus cation and B minus anion. So you'll get the constant equilibrium as with them. You're applying constant equilibrium of 100, meaning that it's like, fine. I mean, it's great. I mean, it's all right. Let's go, bro. But then this is actually smaller. Since this is small, we need to have the idea that the concentration of the reactant here is very um, higher than that of the concentration of product. Yes, that's what I'm saying. But if I say about ionic compound of A to B, that gives 2A plus cations and B minus 2 anion, then the equilibrium constant here value is given as 10,000, and that means that equilibrium constant is increased, meaning that A to B has more and more concentration. Yep. A to B has a lot of more concentration. Actually, that's a way to actually display and stuff. I'll learn all about that. So A to B is like, yeah, boom. That's crazy, my boy. You just got it. You just made that a lot of much more perfection. So AB has more and more stability than A to B. A to B will have to acquire a lot of energy for that, so in order to make it unstable, and the equilibrium constant is much higher right here. And A to B will be is a reactant, but products will be more stable, and therefore less we get the answer. So I think that's that much. I guess I'll practice some questions for now. I'll practice some questions, then I'll read the textbook. Man, it kinda looks like a really bad, but then you just gotta do it sometimes. You gotta have the forces to it. You gotta have the idea. That's the thing. S plus O2. Suppose I apply this compound. Okay, wait, let me do that derivation first. Derivation might be important. So delta G derivation, I'm gonna just go through this derivation. It may be kind of important. So delta G is equal to delta H plus minus D delta S. That's what we need to know. Delta G is basically also minus RT into ln what was it called, K equilibrium, ln equilibrium. That's what you can say. These are equations, two equations, so we'll equate them. So it's gonna be minus RT ln K equilibrium, nice, like that thingy right there. Divide minus RT on both the sides, and we get delta H minus RT, delta naught H, my bad, plus D delta naught S by RT, that will get divided by this T again, is equal to minus RT ln K equation. That is basically how much. I have no idea. Let me just wait, I'm gonna grab we'll phrase that up, and let's wait for a while. We're just gonna do this.
And what else should we talk about? So, oh my god, this is so getting goofy. This is gonna be minus RT divided by minus RT ln K equilibrium. That's gonna get subtracted by this. So this is basically delta naught S by RT minus delta naught H. Sorry, delta naught S by R divided by delta minus delta naught H by RT is equal to ln K equilibrium. So looks like it's fine. I mean, it's not gonna be like affecting a lot, but yeah, I like that. I like that. I like it. I like the confidence. I like that major part. So let's just like move on with it. Let's just go on with it. We gotta do that. We gotta keep that up. Yeah, next is of some questions and some units, but first we need to actually master the derivation. If we don't, then this might be difficult for me to master up with. So if the temperature is increased, the delta naught H divided by RT is decreased, and from that we say the ln K constant equilibrium is increased and equilibrium constant is increased. This is only taking place in endothermic reactions. Why? Because in endothermic reactions we get the idea that energy is basically getting applied. Since energy is getting applied, we see that the reactants sorry, my bad, the reactants the reactants first of all, okay, wait a minute, there is some small thing going on. Really? Okay, wait a minute, what am I saying? Sheesh, damn, 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 damn. So delta so temperature is increased, so meaning that we are just applying more and more enthalpy right there, right? So we are increasing more and more equilibrium constant. From that we are basically breaking down the stability of reactants. That's a great step right there. But for exothermic, this is actually different, because even though you say that the equilibrium, temperature is increased, and you say delta naught H by RT is decreased, that's fine. But you also say the ln equilibrium constant is decreased, and also not only that, equilibrium constant itself is decreased, and this happens inversely again when the temperature is decreased. So when the temperature is decreased, delta naught H by RT is increased. Not only that, ln equilibrium constant is increased, equilibrium constant itself is increased, and bam, that's how we get the answer. Suppose we have a temperature 1. You apply a temperature 1. You'll say temperature. We will just say T1. EQ. Guys, I gotta end this. Bye. Bye, guys, I gotta end this. Yeah, I just gotta end this. Bye.